हमारे आ नहीं रहा है 10 बजे। अरे नहीं आ रहा है जूम, कुछ भी नहीं आ रहा है सामने। चौधरी साहब, जी आवाज आ रही है आपको? आवाज तो आ रही बस है। ठीक है, बस वही चेक करना था आपसे। अभी वीडियो भी काम नहीं कर रहा है। वीडियो है? कौन सा बोला? वीडियो नहीं आ रहा है आपको? नहीं है, लेकिन हमारी तब, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 5 मिनट पहले ऑन करना चाहिए, जिससे कि हम फिक्सअप कर लें। नहीं और नहीं, फिक्सअप करने के लिए फिर 5 मिनट हमारे जाएंगे ही, तो हम फिक्सअप कर रहे हैं। आप जैसा कोई एक्सपर्ट तो नहीं है ना यहाँ पे? हाँ सही बात है। मेरी मेरी तो अभी 12 बजे की है ना लेक्चर। अच्छा, आप खालिद साहब हैं? मैं फरीद बोल रहा हूँ। हैं? अच्छा, फरीद साहब। अच्छा अच्छा, जी जी। मैं तो अभी हम तो मैं तो उससे बात कर रहे थे, इरफान से। हम समझे इरफान साहब हैं। नहीं नहीं, मैं वही चेक करना था आपसे कि देखो, वॉइस आ रही है कि नहीं। जी जी, ये कहाँ से निकाला है? अब वॉइस तो आ रही है, अभी आ जाएगा सब। आ जाएगा। क्लियर आवाज है ना? आवाज तो क्लियर है ना? आ गया। हाँ, आवाज भी आ गई और ये भी आ गया, वीडियो भी आ गया। चलो ठीक है, वेरी बिल्कुल। गुड। तो अभी सुबह में हेलो। नकवी साहब है, नकवी साहब है। क्वीन साहब आ गए? मैं अपना भी ऑडियो म्यूट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी हल उक़्दतम लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र वक्फ लिबरेशन एंड प्रोटेक्शन टास्क फोर्स और अपनी तरफ से जनाब सैयद अली सफ़ी नकवी साहब, सेक्रेटरी सेंट्रल वक्फ काउंसिल दिल्ली का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। और मैं चूंकि टाइम 10 बज चुका है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी बात शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अस्सलाम वालेकुम, a very good morning to all of you. Are you in a position to hear me? अस्सलाम। Yes, audible, clear, audible. First of all, I am very much delighted that the efforts which you have made to make the public aware about the Awqaf and its issues, और ये मौलाना ये ज़कात फाउंडेशन की बहुत अच्छी पहल है। और मैं महसूस करता हूँ कि दर हकीकत ये पहल तो हमें करनी चाहिए थी, मगर बहुत उम्दा बात है कि ज़कात फाउंडेशन ने इस पे इक़दाम उठाया है और मुख्तलिफ ज़ाविये फ़िक्र से जो है इन इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं। एंड आई एम आल्सो बीन इनवाइटेड इन टू डिलीवर सम लेक्चर। सो मेरा रेडी है? हाँ रेडी है। और पावर पॉइंट वहाँ से मैं शेयरिंग का ऑप्शन डिसेबल कर रखा है। सो am I in a position to हैं? शेयरिंग इनेबल करा दीजिए वहाँ से। ये हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो शेयरिंग उसकी अनेबल करनी है। सो ज़रा सा इसको कराइए सो दैट आई कैन कम टू द प्रेजेंटेशन पार्ट।
And before that I was just talking that it's a very good thing. तो बहुत अच्छा रहेगा आज आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं इस सिलसिले में जो जानकारी हासिल करना चाहते हैं या आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स बहुत अच्छा रहा है, तो आपकी तरफ से हाँ शेयरिंग करा दीजिए. स्क्रीन शेयरिंग भी ऑन. उसी ले लो, मैं बैठ जाऊँ. अभी भी नहीं हुआ नहीं क्या? सर अभी आप बोल दीजिए सर. हैं? एक बार आप हेलो, आर यू हेयरिंग मी? इज माय वॉइस इज क्लियर? एंड ये हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर शेयरिंग में आ चुका है नहीं? वेलकम वेलकम कर दिया है उन्होंने, टेक्निकल टीम ने किया है. अच्छा, जी स्क्रीन शेयर कर ठीक है सर, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. जी. आप जब ये खत्म हो जाए ना सर, वो स्क्रीन शेयर वाला ऑप्शन बंद कर दीजिएगा. फिर तो दूसरा बंदा आपको कुछ और शेयर कर देगा. नहीं तो भी नहीं, पैनलिस्ट का ही है, जो आएगा वही करेगा, ऑडियंस का नहीं है, ऑडियंस का नहीं है. आप म्यूट में. हाँ Is it ready to, shall I start? Yes, welcome. Welcome. Sir, welcome, sir. Chaudhary Sahab, can I start? Welcome, sir. Welcome, sir. अच्छा, आपकी आवाज म्यूट है. अच्छा, मैं इशारे से समझ रहा हूँ आपने हाँ कहा. ठीक है. जी. So it's a very good morning to all of you, and let me have some brief introduction about this. The Central Wakf Council is an apex body, as everybody knows, under the administrative control of the Ministry of Minority Affairs, which was established way back to 1964 under the provision of the purpose. For advising the central and the state government and the work boards. So, in terms of the act, the council oversees the functioning of the state work board and its effective functioning. Actually the powers which is vested in the with this council is to issue the directives to the state work board for the financial performance, survey, revenue record and encroachment of the work properties, audit and the annual report, etc. So ऊपर क्यों आ रहा है? ये नीचे नहीं जा सकता है, देखिए कहीं कहीं छुपेगा. इसको या तो नीचे ले आओगे, देखते हैं. पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आपका जो ख्वाहिश है कि इस पे बात की जाए, तो इसमें इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द सेक्शन 12 of the Wakf Act 1995, the government may be has to go for the notification of the official in the official gazette. और उसके बाद ये बात आती है कि ये सेंटर ऑफ गवर्नमेंट हैज टू notify the rules
to carry out the business of the Center of Council. The rules are applicable from date of the publication of the official gazette. ये हमारा ये ऑर्डर जो आए थे 30 सितंबर 1998 में आ गए थे और इसके तहत जो है ये काम जो है शुरू हो गया था। अब बात आती है जब हमारे सेंटर ऑफ काउंसिल के रूल्स वगैरह की जो वे बैक 98 में लागू हो गए थे, तो सेक्रेटरी की जो है इसमें देखा जाए तो एज पर रूल 7 the secretary has to is the there shall be a secretary of the council who shall be a Muslim person, और इसमें जो है जो चेयरमैन है हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर जो कैबिनेट रैंक के हैं इस वक्त, वो जो ऑनरेबल मिनिस्टर होते हैं वो इज द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। सेक्रेटरी जो है इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता है, उसका जिम्मेदारी रहती है तमाम इश्यूज को कंट्रोल करने की, सुपरविजन करने की एंड मैनेजमेंट की। सेक्रेटरी हैज टू मतलब टेक ऑल द डिसीजन एंड सी द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट एक्सेट्रा। इसी में तमाम इश्यूज आ जाते हैं। चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल जो है हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर होते हैं, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 9(2) देयर वुड बी ए 20 मेंबर्स होने चाहिए इस काउंसिल में फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। तो जिसमें कुछ एडवोकेट्स भी होते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होते हैं, जिसमें कुछ जजेस होते हैं, जिसमें कुछ हमारे रिलीजियस बैकग्राउंड से लोग होते हैं, कुछ सोशल बैकग्राउंड से लोग होते हैं। इस तरह से ये 20 लोगों पर मुश्तमिल होती है काउंसिल, जिसके मेंबर्स होते हैं और वो हमें सपोर्ट करते हैं फॉर एडवाइजरी पर्पसेस। और इसमें हमारी जो है कुछ इसी से मुल्हिक जो है कुछ हमारी सब कमेटीज़ बना दी जाती हैं, जो सब कमेटीज़ जो हैं वो डिफरेंट इश्यूज़ को देखती रहती हैं, जिसमें हमारे जो पॉलिसी इश्यूज होते हैं। और जो चेयरपर्सन है शैल बी द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द काउंसिल इक्विवेलेंट टू द chairperson shall make the appointment of the post of the council equivalent to the group A and B post of the center of government। तो ये चेयरपर्सन के लेवल पे जो है ये रहता है, और इससे जो नीचे रहता है वो सेक्रेटरी लेवल पे रहता है, जो मैंने शायद थोड़ा पहले नहीं बताया था, उसमें पे हमारी पहली स्लाइड में था। और द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉय शैल बी द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जो हमारे चेयरपर्सन रहते हैं। हमारा जो रिक्रूटमेंट रूल है 2014 के, इसको अगर देखा जाए तो इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 12 of the Wakf Act and Rule 13 of the Council, the central government has notified the rules of the Central Wakf Council recruitment rules। और इसमें जो है हमारे तमाम स्केल ऑफ पे है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज हैं ऑफ द काउंसिल के जो स्टाफ रहते हैं उनके से मुतालिक। और इसमें जो है आपका हमारे जो there are 32 sanction posts in the council which are covered under the 2014 के जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसी के तहत है। मिनिस्ट्री has got the conduct of the study of the council for its restructuring। तो इन्होंने हमें एक आदेश दिया था रिस्ट्रक्चरिंग का, जो कि हो चुका है, और इसमें जो है हमने आरआर बना के दे दी हैं टू द मंत्रालय। उसके तहत हमें जो है 45 पोस्ट भी दे दी गई हैं, और वो हम उसको, और उसमें एक जॉइंट सेक्रेटरी भी रखा गया है। तो ये हमारे एज पर ये रूल जो है ये पोजीशन चल रही है, और अब आरआर जो है मॉडिफाइड दिए जा चुके हैं और मिनिस्ट्री उसमें नोटिफिकेशन में है। पावर ऑफ सीईओ
जैसे आपने चाहा है उसमें बताने के लिए कि एक हमारा इसमें डिस्कशन पॉइंट है, तो इसमें मेरा अर्ज करना यह है कि द मुतवल्ली ऑफ एवरी वक्फ बोर्ड हैज टू शो द इनकम टू द वक्फ बोर्ड। और ये जो बैंक में जो अकाउंट खुलता है, इसमें एक्चुअली इन्हें अगर ये 7% का जो अपना इन्हें पेमेंट करना होता है, अगर ये नहीं कर पाते हैं तो बैंक को ये अथॉरिटी होती है कि टू इशू दी डायरेक्शन टू दी यार इंफॉर्मेशन टू द वक्फ बोर्ड के ये जो मुतवल्ली है ये इसका पेमेंट सही से नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके यहाँ पूरा रिकॉर्ड रहता है। द CEO ऑफ द वक्फ बोर्ड हैज टू एम्पावर दिस इशू अंडर सेक्शन 73 के तहत, और वेयर मनी बिलोंगिंग ऑफ द वक्फ इज डिपॉजिटेड। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि वहाँ बैंक में तमाम इंफॉर्मेशन रहती है और CEO जो है ये इसके जो है एम्पावर्ड होता है। और अगर वक्फ बोर्ड ये जो बैंक है इसमें अगर मदद करेगा तो ये हमारी इस काम में आसानी हो सकती है। द बैंक ऑफ एनी अदर पर्सन शैल कंप्लाई द ऑर्डर ऑफ द CEO। तो CEO को ये पूरी वो रहती है, और इसमें CEO जो है अगर अब एक्टिव रोल अदा करे तो तमाम इंफॉर्मेशन बैंक से ले सकता है और बैंक इसमें मदद करते हैं। तो ये ज़रा सा एक अहम चीज़ है जिसको आपके इस ऑब्जेक्टिव ने मुझे भी मुतवज्जा किया, और ये चीज़ें बहुत सारी जो है नज़रअंदाज हो जाती हैं, मगर ये इट्स अ वेरी गुड मतलब पावर गिवन इन दी सेक्शन 73 में है। तो इफ द बैंक और एनी अदर पर्सन फेल टू कंप्लाई द ऑर्डर ऑफ द CEO without any reasonable and justification shall be punishable with imprisonment of up to 6 months or a fine of 8,000 or both। तो ये ज़रा अहम चीज़ है जो बहुत कम लोगों के अंडर डिस्कशन रहती है, मगर आपके इस मुद्दे ने मुझे भी मुतवज्जा किया और मैंने देखा सेक्शन 73 एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हाईलाइट कर रहा है। इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है, देखिए इसमें एक अहम चीज ये है कि एज पर सेक्शन 4 जो हमारा है, इसमें सर्वे कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जरूरी होता है, जिसपे आपके यहाँ एक अलग डिबेट हो चुकी है, एक लेक्चर हो चुका है। मैं देख रहा हूँ कि ये जो सेक्शन 4 के तहत जो सर्वे कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है ये तमाम वक्फ बोर्ड में नहीं हो पाता है। तो ये बहुत एक अहम चीज़ है, और इस पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तमाम वक्फ बोर्ड जो है सर्वे कमिश्नर वगैरह को अपॉइंट करें, ताकि ये जो सर्वे का काम जो मध्यम चल रहा है, और हमने देखा कि हमारे यहाँ जो सर्वे का जो इशू है वो अभी देखा जाए तो ये काफ़ी सालों से नहीं हुआ है, जो हर 10 साल में हो जाना चाहिए। सो सर्वे ऑफ औकाफ हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एनफोर्समेंट ऑफ द वक्फ एक्ट। 2013 में ये आदेश दिया गया था कि 1 साल में हो जाना चाहिए था, मगर अभी भी जो है तमाम वक्फ बोर्ड में सर्वे कमिश्नर भी हर जगह नहीं अपॉइंट हैं, कहीं हो गए हैं तो काम नहीं हुआ है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है which is pertaining with the औकाफ, or since there is no survey report or publication of the list of the औकाफ has been received to the council, hence the matter is being taken up with the respective वक्फ boards। तो हम इस पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है सर्वे का काम थोड़ा सा एक्सपर्टाइट हो जाए, ताकि जो बरसों से नहीं हुआ है वो अगर होगा तो वक्फ प्रॉपर्टीज का नंबर बढ़ जाने का चांसेस भी है, क्योंकि जब आइडेंटिफाई ही नहीं हुई है तो कहाँ से वो रजिस्टर्ड वगैरह होंगी। तो इस पे एक बहुत अहमियत का पहलू है जिस पे हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इस पे स्टेट गवर्नमेंट प्रोएक्टिव हो। जहाँ तक मैं इसमें बहुत ही सेलेक्टेड सेक्शंस पे तवज्जो दिलाने की असल में प्लानिंग है, क्योंकि वक्त का दामन तंग रहेगा। तो अगर एज पर सेक्शन 13 और 14 को देखें, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है,
तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वक्फ बोर्ड बहुत अहम मुद्दा रहता है। जब तक वक्फ बोर्ड फंक्शनिंग पोजीशन में नहीं होता है तब तक ये बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो एड्रेस नहीं हो पाते हैं। तो अब पूरी कोशिश इस पे भी चल रही है ताकि वक्फ बोर्ड जो है हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूटेड होने चाहिए। जैसा कि हमें इत्तला है और आप सबकी जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी जानकारी के लिए कि देर आर स्टिल मैनी वक्फ बोर्ड वेयर नहीं हुआ। सिर्फ देखा जाए तो 9 वक्फ बोर्ड में जो है 9 स्टेट में वक्फ बोर्ड जो है काम कर रहे हैं। बाकी बहुत सारी जगह पे जो है जिसकी तफसीर आप हमारी स्लाइड में देख रहे हैं, ये ऐसे वक्फ बोर्ड हैं जहाँ पे या तो मतलब जैसे इसमें बहुत सारी जगह ये भी हो रहता है, ऐसा नहीं है कि कुछ जगहें तो वो हैं जहाँ बिल्कुल ही नहीं हुआ है, कुछ जगह ये वो हैं जहाँ पे अभी काम कर रहे थे और किसी वजह से ख़त्म हुए हैं। तो 9 अभी तो फंक्शनल है ही, कुछ जगह अभी फंक्शनल थे और उनका टर्म पूरा हुआ है, मगर कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जहां अभी तक हुआ ही नहीं है। तो इस पे हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को इस पे मुतवज्जा करें और तमाम वक्फ बोर्ड जो हैं अपना तमाम वक्फ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वक्फ बोर्ड अपना वक्फ बोर्ड में रखें ताकि वो मदद करे इश्यूज को रिजॉल्व करने में। ये एक अगर देखा जाए तो सेक्शन 23 के तहत अपॉइंटमेंट ऑफ CEO होना चाहिए। ये तमाम जो हमारे वक्फ बोर्ड हैं इसमें अपॉइंटमेंट जो CEO का है वो फुल टाइम होना चाहिए। मगर प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि जो हमारे मुस्लिम ऑफिसर्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं हर स्टेट में, उसकी वजह से फुल टाइम अपॉइंटमेंट भी नहीं हो पाता है। एक ये खास वजह है, कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं, उसको मैं ज़रा सा तबसरा करने के ज़रा समझ नहीं पा रहा कि, मगर जो एक खास वजह है, एक डिफिशिएंसी ऑफ द मुस्लिम ऑफिसर्स लग रही है हर स्टेट में, जिसकी वजह से एक फुल टाइम अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता है। तो ये फुल टाइम अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, अगर ये ना हो तो इससे जो है काम मुतासिर हो जाते हैं। तो ये वक्फ बोर्ड की जो बदहाली की वजूहात हैं ये भी एक वजह है कि फुल टाइम CEO नहीं है, जबकि सेक्शन 23 ये बता रहा है कि फुल टाइम CEO होना चाहिए। और अभी देखा जाए तो 3 वक्फ बोर्ड में तो बिल्कुल ही पोजीशन खाली है और बाकी जगहों पे जो है एडिशनल चार्जेस काफ़ी ऑफिसर्स ने लिए हुए हैं, जो उनकी प्राइमरीली जिम्मेदारी कुछ और है और उसके साथ साथ इन एडिशनल जिम्मेदारी वो वक्फ बोर्ड के CEO की अंजाम दे रहे हैं। सो द मैटर हैज बीन टेकन अप बाय द मिनिस्ट्री फॉर नेसेसरी एक्शन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड फुल टाइम अपॉइंटमेंट CEO एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द बोर्ड इज वेरी मच ऑन मतलब इन दी इस पे जो है तवज्जो दी जा रही है और इस पर कोशिश है कि इस पे काम सही से वक्फ बोर्ड में हो जाए और फुल टाइम अपॉइंटमेंट हो जाए। हम अगर देखें सेक्शन 23 को भी, ये भी एक अहम सेक्शन है जिसमें डेलीगेशन ऑफ पावर का प्रावधान रखा गया है। ये डेलीगेशन ऑफ पावर ऐसा रहता है कि कहीं कहीं जो है हमारे वक्फ बोर्ड में अगर CEO नहीं है या बोर्ड भी काम नहीं कर रहा है तो वहाँ ये पावर जो है बड़ी मतलब बेहतरीन रहती है कि अगर या तो कुछ पावर जो है मतलब CEO को भी दी जा सकती हैं, कुछ चेयरमैन को भी दी जा सकती है अगर फंक्शनल काम कर रहा है। मगर अगर वर्क बोर्ड में फंक्शनल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं चल रही है तो किसी तीसरे ऑफिसर को या किसी तीसरे स्टाफ को कुछ स्पेशल पावर्स दे दी जाती हैं ताकि जिसके तहत वर्क बोर्ड स्मूथली फंक्शन करता रहे। क्योंकि ऑफिस तो चलना है, जब ऑफिस चलना है तो उसमें ये तो नहीं हो सकता कि डे टू डे एक्टिविटीज मुतासर हों। तो एज पर सेक्शन 27 इसमें ये प्रावधान रखा गया है ताकि वक्फ बोर्ड जो है अपनी स्मूथ फंक्शनिंग करते रहें। और ये पावर भी अभी सब जगह नहीं है। द प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड ओनली इन 17 वक्फ बोर्ड। तो 17 वक्फ बोर्ड में ये काम हो चुका है। अब इस पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि बिलखुसूस हमारी मिनिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि सेक्शन 27 और सेक्शन 109 पे जो है
काम हो और ये जो है ब्रीफिंग होनी है हमारी टू द पार्लियामेंट, ये इस पे बहुत अहमियत के साथ जो है तवज्जो दी जा रही है। एंड दिस मैटर इज ऑलरेडी मतलब इन ए वेरी लाइमलाइट में है इस वक्त मिनिस्ट्री के भी और सबऑर्डिनेट कमेटी के, और इस पे जो है वो काम हो रहा है। सेक्शन 80 जो है ये मुतवज्जा करता है ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द वर्क बोर्ड को, मगर इसमें जो है हम ये देख रहे हैं कि डिस्पाइट दिस पावर हैज बीन गिवन, ये एनुअल ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द बोर्ड हैज नॉट बीन कंडक्टेड इन मैनी स्टेट वर्क बोर्ड। तो ये बहुत एक अहम चीज़ है कि जिसमें स्टेट वर्क बोर्ड को जो है मतलब घेरना होता है, उनको मुतवज्जा करना होता है, उन्हें एहसास दिलाना होता है कि आप अपना ऑडिट कराएं और इसको जो है टू द काउंसिल पेश करें। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी बीन अप्राइज्ड टू अपॉइंट ऑडिटर टू कैरी आउट द ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द रेस्पेक्टिव बोर्ड। बात अगर आती है सेक्शन 83 की, देखा जाए तो यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रिब्यूनल इज वेरी मच बीन टेकन केयर, और ट्रिब्यूनल्स का जैसे आप लोगों ने अदरवाइज भी एड्रेस किया है इस इशू को, कि जो हमारे जो एनक्रोचमेंट के जो एरियाज रहते हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स चल रही हैं एनक्रोचमेंट की वगैरह वगैरह, अब वो बात ये आती है कि लाखों कहीं कहीं तो हैं वक्फ प्रॉपर्टीज, कहीं कहीं हज़ारों में हैं, तो अगर वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं होंगे तो वो केसेस कहाँ एड्रेस होंगे। अब वो केसेस मैं देख रहा हूँ कि कहीं कहीं सिविल कोर्ट में चले जाते हैं, तो वो तो एड्रेस हो नहीं सकते। तो इसकी वजह से वक्फ बोर्ड में जो है ट्रिब्यूनल्स का होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जब राजस्थान का विजिट किया था तो देख के मुझे अच्छा लगा। अभी वैसे मैं सब जगह नहीं जा चुका हूँ, मगर कहीं कहीं हो सकता है और भी हो। राजस्थान में मेरे नोटिस में बात आई कि वक्फ बोर्ड के अंदर ही एक फ्लोर पे ट्रिब्यूनल है, और वहीं पे देन एंड देयर केसेस इशू हो मतलब एड्रेस होते रहते हैं। तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ट्रिब्यूनल्स जो हैं वहीं होंगे तो लोग इसकी अहमियत को समझते हुए इन मसाइल को वहीं के वहीं एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हर जगह होनी चाहिए। और कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ कि ट्रिब्यूनल्स की इतनी किल्लत है कि जैसे शायद यूपी में ही देखा जाए तो गालिबन एक ही है जो ट्रिब्यूनल काम कर रहा है हमारे रामपुर में। तो ये ज़रा सा ये एक अहम चीज़ है, इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स का जो है फॉर्मेशन, मगर कहीं कहीं बहुत अच्छा है, जैसे शायद हरियाणा या पंजाब में रिसेंटली मुझे कहीं जिक्र आया था कि वहाँ कई कई ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है जो होना चाहिए, और यही सेक्शन जो है 83 इस पे हमको मुतवज्जा करता है और मदद करता है कि इसमें आप हमको इक़दाम उठाने हैं। तो अब अगर हम आते हैं सेक्शन 109 जो कि एक बहुत एक अहम है, इट्स रिलेटेड विद द पावर टू मेक द रूल्स। क्या है कि बहुत सारी जगह अभी तक जो बोर्ड है वो ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, हो गया तो पावर जो है वो नहीं जो है मतलब नोटिफाई हुई हैं। तो इस पे बहुत मतलब तवज्जो दी जा रही है, और हम लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं कि किसी सूरत से अब तमाम वक्फ बोर्ड जो हैं वो एज पर सेक्शन 109 अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं, उसे नोटिफाई कराएं, ताकि जो इश्यूज हैं उसकी स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू नोटिफाई द रूल्स एज पर दिस। ये हमारा जो वक्फ प्रॉपर्टी लीज रूल है ये 2014 में बने थे, और उसके बाद और इसको जो है वो किया गया। पहले बने थे, उसके बाद 2014 में फिर इसको थोड़ा अमेंडमेंट किया गया, और रिसेंटली भी कुछ सेक्शंस को जो है और उसमें ज़रा सा एनलाइटन किया गया है। और दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इशू फॉर द लैंड मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट वक्फ बोर्ड टू ऑगमेंट देयर रिसोर्सेज।
The central government, in exercise of the power conferred under the section 56 of the Act, has framed and notified the rules to grant the lease of work properties. The State Work Board has been provided a copy of the lease rules, and subsequently the amended one has been provided. तो ये हमारे recently हुआ था और इसकी कॉपीज जो हैं सबको दे दी गई हैं, और अब पूरी इसमें कोशिश है कि जो वक्त प्रॉपर्टी लीज रूल हैं ये इसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। तो अब अगर ये तमाम जगह पे ये लागू हो जाए तो इसमें जो है बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का फायदा दिख रहा है। और a monitoring performa has been developed by the council to collect the information in this regard. तो इससे मुतालिक अगर किसी को भी कहीं कोई ज़रूरत आती है तो वो हमारे वामसी पोर्टल पे जाके इसको देखे और समझे, और कोई बात हो तो उससे जो है मतलब अपना पॉइंट भी रेज कर सकता है। मगर ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है कोशिश की जा रही है तमाम डिटेल वामसी पोर्टल पे आ जाएं, जो मैं अभी आगे चल के बताऊंगा। तो वक्फ प्रॉपर्टी लीज रूल का जो है इसमें काफ़ी अब प्रोविज़न रखा गया है कि जो रेवेन्यू जो है बेहतर हो सके। हमारे क्योंकि ये अच्छा फोरम है आपने दिया है, मैं इसमें कुछ चीज़ें ज़रा सा और हाईलाइट करना चाहता हूं ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि द काउंसिल जो है इसकी फंक्शनिंग में कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। जो हमारी दो स्कीम चल रही हैं, कौमी वक्फ बोर्ड तरक्याती स्कीम और एक शहरी विकास संपत्ति योजना। तो हमारा कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि विद रिगार्ड टू द कौमी वक्फ बोर्ड तरक्याती स्कीम, वो ये है कि हमारी जो स्कीम है ये इसको इसीलिए रखा गया था ताकि हमारे जो औकाफ है इसकी बेहतरीन मैनेजमेंट हो सके, वक्फ मैनेजमेंट। तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वक्फ बोर्ड, द मिनिस्ट्री हैज फॉर्मुलेटेड अ स्कीम which was earlier known as a computerization of the वक्फ रिकॉर्ड, वक्फ बोर्ड कहलाती थी। तो ये वक्फ रिकॉर्ड को डिजिटाइज करवाना, उसको मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम में लेके आने के लिए ये रखी गई है। और इसमें जो है इन ऑर्डर टू अचीव दिस रिजल्ट द नीड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द वक्फ बोर्ड वाज इम्पोर्टेंट एंड दस द गवर्नमेंट हैज लॉन्च दिस स्कीम। और इसी स्कीम द स्कीम वाज टू इम्प्लीमेंटेड बाय इन द फेज मैनर, ये फेज मैनर में रखी गई थी। अब काफ़ी जो है ये जो है एडवांस स्टेज में आ गई है। इसका जो है अब सिर्फ एक साल का रिन्यूअल की और बात चल रही है ताकि ये स्कीम जो सक्सेसफुली काफ़ी हद तक रही, क्योंकि इसने काफ़ी जो है हमारी जो रिकॉर्ड्स थे उसको डिजिटाइज करवाया है। हमारा इसी स्कीम के तहत जो है इसमें जो मैं शायद आगे चल के आएगा, मैं यही बता देता हूँ कि इसी स्कीम की बात आ गई है। तो ये जो हमारी स्कीम है इसमें हमने तमाम स्टेट वक्फ बोर्ड को स्टाफ प्रोवाइड किया है टू वर्क with regard to the accounts, with regard to the legal issues। तो इसमें हमारे असिस्टेंट प्रोग्रामर हैं, अकाउंटेंट हैं, लीगल असिस्टेंट हैं, लीगल सपोर्ट ऑफिसर हैं, जोनल वक्फ ऑफिसर हैं, सर्वे असिस्टेंट वगैरह रखे गए हैं। तो ये जो चीज़ है ये इसीलिए रखी गई थी कि ताकि ये तमाम सपोर्टिंग स्टाफ होगा तो वक्फ बोर्ड को मदद करेगा। इसी में दूसरा एस्पेक्ट ये भी रखा गया कि तमाम वक्फ बोर्ड को जोड़ दिया जाए। तो इसमें हम लोगों ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी अब प्रोवाइड की है तमाम वक्फ बोर्ड को। अब ये आसानी हो गई है कि हर वक्फ बोर्ड एक दूसरे से ना सिर्फ जुड़ सकता है बल्कि हम वेरी फ्रिक्वेंटली उनसे जुड़े रहते हैं और दे आर सीकिंग द एडवाइजेज एंड वी आर गिविंग ऑल दिस सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन। इसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर वगैरह कभी भी आ जाते हैं और यहाँ से तमाम वक्फ बोर्ड को एड्रेस किया जाता है। तो ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी इस स्कीम के तहत जनरेट की गई ताकि न सिर्फ जो वक्फ बोर्ड है वो कंप्यूटराइज हो बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी। और इसी में एक स्कीम में एक अच्छी चीज़ ये रखी गई है कि जो औकाफ अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए
अवार्ड रखा गया जिसको मुतवल्ली अवार्ड करके कहा जा रहा है। और पिछले साल जो है इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था जिसमें ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं खुद आए थे और उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से तमाम जो अच्छे कारकर्दा लोग हैं उनको अवार्ड दिया गया था। और उसमें 50,000, 75,000 और 1 लाख का अवार्ड जो है इस तरह से रखा गया है। तो ये उन तमाम लोगों के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं। इसी स्कीम में कुछ और भी स्टेशनरी से जुड़ी हुई भी हैं, मदद दी जा रही है। इसी में सर्वे कमिश्नर के लिए भी सैलरी दी जाती है वगैरह वगैरह। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो तमाम स्टेप हुए इससे एक ख़ास हमारा जो प्लान था वो ये था कि जो वामसी हमारा जो वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया है इसमें तमाम इंफॉर्मेशन जो है इसके ज़रिए पोर्टल पे ला जाने की बात चल रही थी। तो अब इसमें डिफरेंट मॉड्यूल बनाए गए हैं ताकि उन मॉड्यूल को अपडेट किया जाए और उन मॉड्यूल को अपडेट करने के साथ जो है तो ये फ़ायदा होगा कि जितने लोग हैं उन्हें तमाम दुनिया में बैठे बैठे तमाम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और ये जो हमारे जितने भी वक्फ बोर्ड में हमने जिनका भी जिक्र किया था कि स्टाफ है, ये स्टाफ दे आर सपोज टू हेल्प टू दी वक्फ बोर्ड टू अपडेट दिस इंफॉर्मेशन। अब देखा जाए तो देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ औकाफ की बात आती है तो काफ़ी रजिस्ट्रेशन जो है जगह पे नहीं हुए हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए तमाम पोर्टल पे ये इंफॉर्मेशन अगर आ जाएगी तो हर एक को पता चल जाएगा कि हमारा हर स्टेट में कितनी वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह से कौन लोग एनुअल रिटर्न भर रहे हैं, कौन से लोग हैं जो लीजिंग मॉड्यूल में अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वक्फ से जुड़े हुए जितने लिटिगेशन के इश्यूज हैं उनको ट्रैक किया जा सकता है। तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ये जितनी इंफॉर्मेशन अगर वहाँ पे एंटर्ड हो जाएगी, जैसे हमारी कोशिश चल रही है, तो हर एक को बैठे बैठे ये इंफॉर्मेशन रहेगी कि हमारी स्टेट में इतने इश्यूज चल रहे हैं, ऐसे एड्रेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि अगर इस पर हमारा जो पूरा सिस्टम तमाम वक्फ बोर्ड का अच्छा काम करने लगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन जो है बहुत आसानी से हर एक को अवेलेबल होगी। और ये हमारे जो स्टाफ हैं ये हमें अपडेट भी करा सकते हैं, हमसे गाइडेंस भी ले सकते हैं कि इन इश्यूज़ में हमें क्या करना है, क्योंकि हर लेवल के इश्यूज़ हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसीलिए की गई थी ताकि इस वक्त मैनेजमेंट में आसानी पैदा हो और ये बेहतर से बेहतर किया जाए। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने पिछले सालों में एक हमें टारगेट भी रखा था कि 100 डेज में आप कौन सा काम करेंगे। तो पिछले साल हम लोगों ने जो है तमाम वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड है वो डिजिटाइज करवाया है। ये बहुत अहम पहलू था। जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं इनके पेपर्स अगर अवेलेबल ना हो तो कुछ नहीं हो सकता इन फ्यूचर। तो जो भी अवेलेबल अब है उसको गवर्नमेंट ने चाहा था कि डिजिटाइज करवा लिया जाए। तो लिहाजा मिनिस्ट्री ने जो काम हमसे करवाया था इसमें हम लोग बड़े सक्षम रहे और हमारे स्टाफ ने जो है इस काम को करवा लिया तमाम वक्फ बोर्ड में। अब तकरीबन 99% बस ही कहीं कहीं जो है कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं जिसको ठीक किया जा रहा है, नहीं तो ये काम 100% हो चुका है। और बाकायदा इसको पार्लियामेंट में भी पेश कर दिया गया कि ये काम एक बहुत ही सराहनीय हुआ है जो हिंदुस्तान में पिछले साल के तमाम जो रिकॉर्ड हैं वक्फ बोर्ड में अवेलेबल वो डिजिटाइज हो चुके हैं। अब हमारी कोशिश ये चल रही है कि हम उसको क्रॉस चेक भी करवा रहे हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जो रिकॉर्ड हमें बोला गया है कि हमने कर लिया है उसमें कहीं एरर तो नहीं है। तो हम लोग रैंडमली चेकिंग कर रहे हैं और यहाँ से चेकिंग कर करके बता रहे हैं कहीं अगर एरर है तो ये एक कोशिश चल रही है। इसी में एक अहम अटेम्प्ट हुई है, वो GIS और GPS का वर्क भी शुरू करा दिया गया है।
ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम था जो कई सालों से पेंडिंग चल रहा था। ये दोनों काम तकरीबन 3 साल पहले एग्जीक्यूट कर दिए गए थे, मगर इसमें जो कमी बाकी थी वो पिछले साल डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड की शक्ल में पूरी कर दी गई। और अब दूसरा काम जो जीपीएस मैपिंग का है वो भी बहुत अहम है, ताकि ये जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, ये पेपर तो ठीक है अच्छे हो गए, मगर अगर इसको कोई देखना चाहे अमेरिका में बैठ के या कहीं ऑस्ट्रेलिया में बैठ के हिंदुस्तानी कि मेरी वक्फ प्रॉपर्टी की क्या पोजीशन है, तो वो उसको पता नहीं चल सकता था। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने ये एक और काम की शुरुआत करवाई थी, जो काउंसिल को जिम्मेदारी दी गई है, ताकि ये तमाम वक्फ प्रॉपर्टी जो हैं इनकी फोटोग्राफ्स इन एंड आउट, अगर मतलब बिल्डिंग है तो उसमें इनसाइड के भी फोटोग्राफ लिए जा रहे हैं, बाहर के भी लिए जा रहे हैं, ऊपर से हर तरफ से, ताकि वो तस्वीर जो है जब वो वामसी पोर्टल पे आ जाएगी तो बहुत आसानी से आदमी देख सकता है कि इसकी लेंथ एंड विड्थ ये थी, यहाँ से यहाँ तक इसका हुदूद अरबा था, और अब उसमें कहीं कोई फर्क आया है तो वो पॉइंट आउट हो जाएगा। इसी तरीके से जो जितने बागात हैं, खेत हैं जो वक्फ किए गए हैं, उनकी भी तमाम तफसील जो है इसमें आ जाएगी। और ये काम अब हम लोगों ने जो है पिछले साल बहुत तेज़ी से शुरू किया था, कोरोना ने मुतासिर कर दिया, नहीं तो ये काफ़ी अच्छा काम तेज़ी से हो गया था। और हमने इसमें जो है क्या कहते हैं कि तमाम एजेंसीज को जो है आइडेंटिफाई किया है, जिसमें AMU अलीगढ़ भी है, IIT रुड़की है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, IIT कानपुर है, और दीगर वक्फ बोर्ड ने अपने आप भी कुछ इंस्टीट्यूशन को जोड़ा है जो काम कर रहे हैं, एजेंसीज काम कर रही है। तो ये तमाम एजेंसीज जो हैं ये वक्फ बोर्ड में जितने भी औकाफ हैं वहाँ का जाके सर्वे करते हैं, सर्वे करके उन फोटोग्राफ्स को खींच के उनकी पोजीशंस को लेके इस पे वामसी पोर्टल पे लेके आ रहे हैं, ताकि ये इन फ्यूचर तमाम ये जानकारी जो है हर एक के लिए आसानी से अवेलेबल रहे। और इसी से दूसरी जुड़ी एक हमारी जो एक शहरी विकास संपत्ति योजना है, ये भी ज़रा सा मैं चाहता हूँ हमारे लोगों को पता होना चाहिए, व्यूवर्स को जो इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि काउंसिल जो है ये बरसों से ये काम कर रही थी, जो अभी इसको फिर एक्सटेंशन मिल रहा है, वो ये कि जो ज़मीनें हैं जो खस्ता हाली में पड़ी हुई हैं, जिनका मुतवल्लियों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं, उनको ये लोन देती है स्कीम। और इस स्कीम में दो पहलू हैं, एक तो है 2 करोड़ तक दिया जाता है, या दूसरा एक है जिसमें 75 लाख तक देते हैं, या 75% ऑफ द जो उनका बजट होता है, तो उसमें ये लोन दिया जाता है। इस लोन को 8 साल के वक्फे में 16 इंस्टॉलमेंट में लोग रीपे करते हैं, और उसमें जो है ये विदाउट इंटरेस्ट स्कीम फाइनेंस करती है तमाम मुतवल्ली लोगों को। तो ये एक स्कीम अच्छी बहुत चल रही है, और इससे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि कहीं कहीं लोगों ने मैरिज हॉल बनाए हैं, किसी ने हॉस्पिटल बनाए हैं, किसी ने कोल्ड स्टोरेज बनाए हैं, कुछ स्कूल भी बने हैं। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ जगहों पे कमर्शलाइज मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्कीम को चलाया जा रहा है, ताकि वक्फ डेवलपमेंट हो और उससे जो है आमदनी हो। जब आमदनी होगी तो रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो जाएगा और इससे वक्फ को फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये एक है, और इन्हीं दोनों स्कीम्स को हमारी जो है नीलाड ने स्टडी भी किया था और बड़ी अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट दी थी, जो अब दोबारा जो है IIT दिल्ली ने किया है इसको दोबारा, और उन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी है कि ये स्कीम बहुत अच्छी चल रही है, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो हमारी कोशिश है कि इन फ्यूचर इसमें जो फाइनेंस है थोड़ा बेहतर किया जाए, 75 लाख के बजाय 1 करोड़ कर दें हम, और 2 करोड़ के बजाय 3 करोड़ कर दें। देखते हैं इसका अप्रूवल जब आएगा तो उसमें इक़दामात लिए जाएंगे।
इसके जो मेजर फीचर्स हैं मैं भी आपको बता ही चुका, ये उसी की तफसील है जो यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मुतवज्जा करना चाहता हूँ इस स्कीम की थोड़ी सी कि कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं जो जल्दी जल्दी मैं दिखाता चलूँ, ताकि ये जो देखिए कि हमारे जो इन जो हमने जिसका जिक्र किया, इससे ये फायदा हुआ कि देख रहे हैं आपके सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, किसी ने मैरिज हॉल बनाया है, किसी ने कुछ और बनाया है। ये हमारी कर्नाटका की सक्सेस स्टोरी है जो इसमें दिखाई दे रही है। और इसी से जुड़ी कर्नाटका में जो है यहाँ पे बाकायदा एम्बुलेंस वगैरह भी चल रही है, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह बनाए हैं लोगों ने। तो ये बड़ा अच्छा वो जो है काम है जो कुछ वक्फ बोर्ड ने किया है। और इसी से जुड़ा कर्नाटका और केरला वगैरह का इसमें काफ़ी अच्छा रहा। और हमारा जो अब मैं देख रहा हूँ कि पंजाब और हरियाणा जो है, जहाँ तक रेवेन्यू जनरेट करने की बात है, वो भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। और इसमें ये काफ़ी सक्सेस स्टोरीज में जा रहे हैं और इन लोगों को अवार्ड मिले हैं पिछले सालों में। और अभी मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो हैं चीज़ें अगर होती रहेंगी तो इससे वक्फ का बड़ा फ़ायदा होगा। ये मैंने आपको अभी जैसे बताया था कि हमारी जो इस स्कीम में मुतवल्ली अवार्ड रखा गया है, तो ये पिछले साल बाकायदा इस पे जो है फंक्शन हुआ था। ये उसी की डिटेल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्राइजेस रखे गए हैं, और इसमें बाकायदा जोन बना दिए गए। 5 जोन हैं, उसमें 5 जोन में वो रहता है स्क्रीनिंग के सेंट्रल वक्फ जोन से कौन सी स्टेट्स हैं, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, इस तरह से तमाम 32 वक्फ बोर्ड्स को इन जोन में कर दिया गया है ताकि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस दिए जा सके। तो ये बाकायदा पिछले साल की आपकी जानकारी के लिए है जिनको अवार्ड दिया गया था। ये वो लोग हैं जो मिनिस्टर के साथ बहुत बड़ा फंक्शन किया गया था। इसमें सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, तमाम मौजूद चेयरमैन और CEO वगैरह आए थे। तो ये इस पे इक़दाम उठाए गए हैं ताकि ये वक्फ डेवलपमेंट में पॉजिटिव लोग अपना रोल प्ले करें। एक हमारी एक स्कीम है जो उसको भी मैं मुतवज्जा करना चाहूँगा, वक्त का दाम होता जा रहा है, वो ये कि हमारी जो काउंसिल है वो कई तरह के इश्यूज को एड्रेस कर रही है, जिसमें एक फ्री कोचिंग भी चल रही है UPSC और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एग्ज़ाम वगैरह रहते हैं उसके लिए। तो ये जो स्कीम है ये बाकायदा जामिया मिलिया इसमें काम कर रही है, हमारे AMU काम कर रही है, जामिया हमदर्द कर रही है। जामिया मिलिया बल्कि अभी रुकी हुई है, उन्होंने प्रपोजल दिया है, मगर अभी जो एट प्रेजेंट हमारे यहाँ जो बेनिफिशरी हैं वो हमारे AMU है और जामिया हमदर्द है और बॉम्बे में अंजुमन इस्लाम है। ये लोग बाकायदा अपना अच्छा कोचिंग चला रहे हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया भी प्रपोजल दी है। तो वही सब अंडर पाइपलाइन है। और मैं समझता हूँ कि ये काउंसिल इसमें जो हमारा जो एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था दैट वी आर हैविंग ए स्कीम आउट ऑफ विच द लोन वापस होता है। जब वो लोन वापस होता है तो रिवॉल्विंग फंड में उसको डाल देते हैं हम लोग। उस रिवॉल्विंग फंड से या तो हम 75 लाख का लोन दे देते हैं या ये स्कीम चला रहे हैं। तो ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए रखा गया है क्योंकि ये औकाफ मुस्लिम्स ने छोड़े थे, तो इसलिए ये कोशिश रहती है कि जो हमारे अच्छे इदारे कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उनको ये एडिशनल सपोर्ट दे दी जाती है कि वो 50 लोगों को जो है अपने यहाँ ट्रेनिंग दे के कर सकते हैं। ये शायद हो गया है। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल कि मेरा ये एक मुख्तसर सा एक इंट्रोडक्शन मैंने जो दिया अपने काउंसिल और इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन से जुड़ी हुई बातें हैं, अगर इसी से मुताल्लिक कोई अगर सवालात हों तो आई एम देयर अवेलेबल टू आंसर दोज थिंग्स। Thank you very much for giving this opportunity to brief about the
रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द काउंसिल, और हमारे जो काउंसिल के इक़दामात हैं और ये तमाम जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसका एक मुख्तसर सा पेश किया। अरे सर आपको बार-बार फोन करते हैं। ज़कात फाउंडेशन का कि उन्होंने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है, by which they are trying to educate the masses and they are trying to create the awareness among the people to address the issue and we are there to help. Thank you very much, and I'm available for any question to be answered. Thank you very much. अब्दुल रहमान साहब, अब्दुल रहमान। हाँ सर पूछ रहा हूँ, एक मिनट। सर इसमें एक अकरम जब्बार साहब ने कहा है कि इन्होंने पूछा है कि हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू अचीव करेक्शन एंड कंप्लीशन ऑफ वामसी डाटा। I'm unable to hear anybody. Is वो है ना? हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो। हाँ यस सर। हेलो, हेलो कैन यू हियर मी? यस सर। कहाँ दिया वो आंसर क्वेश्चन? I am unable to hear anybody. Is there any question for me? यस सर। Yes, there is one question. हाँ सर, की आवाज पूछ आ रहे नहीं हैं। रही। हेलो जनाब चौधरी साहब कुछ बोल रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ सर, तो आप हैं? इधर से तो आवाज आ रही है, उधर सिस्टम में है कुछ प्रॉब्लम। आपकी तरफ आवाज क्या बेटा? अनम्यूट करिए अपनी तरफ। हेलो सर, ये एक क्वेश्चन है सैयद जहूर मुस्तफा साहब की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कैन बी मुतवल्लिज हैव एक्सेस टू वामसी ऑनलाइन पोर्टल। हेलो जी जी हेलो, वो अनम्यूट करिए, आपकी तरफ से ही प्रॉब्लम है, वो आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करिए उधर से। जी अब आई, आपकी आवाज आई। जी जी आवाज आ रही। हाँ क्वेश्चन पूछिए अब्दुल रहमान। हेलो नकुल साहब, एक पहला पूछ रहे क्वेश्चन। हैं। हाँ हेलो, बोलो। सैयद जहूरुल मुस्तफा साहब पूछ रहे हैं कैन वी मुतवल्लिज हैव एक्सेस टू वामसी ऑनलाइन पोर्टल। हाँ सबको अवेलेबल है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वामसी पे तो कोई भी जाके मतलब उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। इट इज इन द पब्लिक डोमेन। सिर्फ उसका जो एंट्री है that is not accessible to anybody except those who are certified and who are the मतलब यूजर्स, उन्हीं को है। मगर जो यूजर आई मीन दैट वक्फ बोर्ड जो है, उन्हीं को जरा सा ये इसमें वो दिया जाता है कि वो अपना एंटर कर सकते हैं, रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। मगर अदरवाइज पब्लिक डोमेन में सिर्फ they can see the information, they can read the मतलब इश्यूज। पूना से अकरमुल जब्बार साहब पूछ रहे हैं कि वामसी में जो डेटा है वो इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट है, तो ये कंप्लीट इसे कंप्लीट इनकरेक्ट डाटा के लिए कितना टाइम लगेगा इसको सही करने के लिए? हाँ देखिए, इनकरेक्ट तो नहीं है, इनकम्प्लीट जरूर है। वो जैसे मैंने बताया था कि इस पे काम जो है अभी पिछले साल से हमने बहुत एक्सपेडाइट किया है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर तो बन गया था और इसमें काफ़ी काम हो जाना था, मगर
फॉर वेरियस रीजंस ये चीज़ जो है वो नहीं हो पाई थी, मगर अभी इस पे हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। तो जब से मैं यहाँ चार्ज लिया हूँ इसमें हमने काफ़ी चीज़ों में वो कर दिया है, और अब बहुत फास्ट इसकी जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। और हमारी पूरी कोशिश है कि ये तमाम जो मॉड्यूल्स हैं इसमें तमाम इंफॉर्मेशन अब तकरीबन हमें फोर्टनाइटली दी जाएगी, और हम इसमें बाकायदा रिव्यू कर रहे हैं थॉरोली। और ये मैं समझता हूँ कि विद इन 6 मंथ जो है बहुत मतलब बिग डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहलू हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा हमने जिक्र किया था, जो स्टाफ वहाँ पे हमने स्ट्रेंथनिंग ऑफ वर्क बोर्ड के लिए दिया था, उनको भी वर्क बोर्ड ने इस काम पे नहीं यूज़ किया कि ये अपडेट करें, बल्कि उन्हें अपने हिसाब से उन्होंने यूज़ किया। तो इस पे अभी हमने ग्रिप मजबूत की है कि नहीं, वो इन एडिशन जो भी काम कर रहे हैं वो तो करेंगे, मगर ये इन एडिशन वो वामसी पे तमाम रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे जो है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में 5-6 महीना तो शायद लग जाएगा, मगर ये 5-6 महीने के बाद एक अच्छी जानकारी इस पे आने लगेगी, मतलब काफ़ी आ जाएगी। मतलब अपडेट तो ये हर 15 दिन में, अब तो हर वीक में ये इन्हें अपडेट करना है, और काउंसिल को हर 15 दिन में बताना है कि कितना उन्होंने इसमें वो किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ महीने ज़रूर लगेंगे, और जिसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। जी सर, एक सर उमर साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट CWC हैज बीन डन टू कंप्लीट द वक्फ सर्वे इन द स्टेट सो फार, प्लीज इन्फॉर्म अस। सर्वे का काम मैंने बताया, जैसे कि काउंसिल बीइंग अपेक्स बॉडी इज सपोज टू मॉनिटर एंड सी द इश्यूज। तो हमारे यहाँ से एक ग्रांट जरूर जाती है सर्वे कमिश्नर के मदद के लिए, मगर क्योंकि फिर वही है कि स्टेट गवर्नमेंट को सर्वे कमिश्नर वगैरह अपॉइंट करने चाहिए, और वो एक पूरा चैनल तैयार करके रखना चाहिए, मगर वो नहीं हो पा रहा है। तो उस पर हमारी कोशिश तो ज़रूर चल रही है, मगर अभी उसमें देखिए कितने तेज़ इक़दामात होते हैं, वो देखना है। अभी ये स्टेट गवर्नमेंट को करवाना है, सिर्फ हमें सपोर्ट देना है, जो हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, मगर वो भी पूरी तरह से उसको अवेल नहीं कर पा रही है। और इस पे रेगुलर मॉनिटरिंग जो है अब मिनिस्ट्री खुद भी कर रही है। तो मैं समझता हूँ इसमें अब थोड़ा सा तेज़ी आएगी, क्योंकि सेक्रेटरी हिमसेल्फ इज़ इंटरफेयरिंग, और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ हमारी एक मीटिंग हो चुकी है इन तमाम मुद्दों को लेके, कि ये तमाम जो अभी तक सवालात हुए आपके, या जो मैंने ब्रीफिंग दी है, इस पे हमारा जो पूरा सीरियस अटेम्प्ट है जो चल रही है, और मैं समझता हूँ कि ये तेज़ी से इम्प्रूव करेगी। सर, एक मोहम्मद आफ्ताब अंसारी हैं, इन्होंने लिखा कि सर मैं जानना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड की एनुअल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कितना है। ये जो सक्सेस स्टोरी है ये तो कुछ उन इलाकों की है जो संपन्न है, पिछले इलाकों में ये क्या कर रही है? देखिए, मैंने बताया था कि जो हमारे इस देखिए बहुत सारे वजूहात हैं जिसमें ये सवाल के अच्छे जवाबात नहीं बन पाते। वो ये है कि देखिए, एक तो वक्फ बोर्ड भी कहीं कहीं बातों को सीरियसली नहीं लेता है, ऑडिट नहीं करा रहा है। हमने बल्कि कहा भी है कि भाई अगर आपको कोई परेशानी है तो बताएं, मगर ये कि मुश्किल क्या होती है कि वक्फ बोर्ड अगर अपना एक तरफ तो मुतवल्ली ये इक़दामात ले रहा है कहीं कहीं, कि वो अपने बताता ही नहीं है, वो देता नहीं है अपनी इंफॉर्मेशन। तो एक तो पहलू वो भी है, कहीं वक्फ बोर्ड खुद खस्ता हाल है, उसके यहाँ स्टाफ ही नहीं है, या है तो वो कहता है कि साहब मेरी 2 साल से तनख्वाहें नहीं गई। तो ये जो मुख्तलिफ जावियों से जो तकलीफ के सिचुएशंस हैं, उसमें मतलब ये भी हो जाता है कि ऑडिट नहीं हुआ तो ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई,
तो हम पूरी इसमें अब इक़दामात उठा रहे हैं। अब हमारा एक इस पे भी बहुत ही सीरियस अटेम्प्ट है कि हम इन चीज़ों को देखिए रूस वक्फ एक्ट में तो प्रावधान है, जो मैंने देखा आने के बाद, कि सुनते तो यही आए थे जो बातें आप और हम आपस में कर रहे हैं, मगर इस पे क्या वजूहात हैं, तो इक़दामात तो अगर हम सब मिलकर अच्छे उठाएंगे तो ये हो तो सकता है। अभी क्या है कि वक्फ बोर्ड अपनी इंफॉर्मेशन दे ना, अब अगर वो देगा ही नहीं तो कैसे? तो अब उसमें कोशिश यही है कि हम अपना एक सेल क्रिएट करने की कोशिश में है कि यहाँ पे वो पूरी इसकी मॉनिटरिंग करे, यहाँ से स्टाफ भी जाए। अब हमारी ये प्लानिंग है, क्योंकि काउंसिल खुद अपने में एक बहुत मुख्तसर सी रही, इसको भी इतना मौका ही नहीं मिला कि वक्फ बोर्ड में जाए, जाके देखे समझे, और कहीं अगर मुश्किल है तो उसको आसान करे, और कुछ चीज़ें जिनमें वो अवॉइड कर रहे हैं उनको वो करे कि भाई आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो बहरहाल इस पे इक़दाम तो उठाए जा रहे हैं। अब देखिए कितने मतलब मुतासिर कर सकते हैं इन बातों में, देखिएगा। जी और सर कोई बात? जाहिद अहमद दार साहब हैं, इन्होंने लिखा है कि वाइल्ड digitalizing the survey, the research scholar currently working on the work should be contacted. जी नहीं, देखिए हर जगह पे जो ये हमारी जो एजेंसीज हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का GIS डिपार्टमेंट जो है रिमोट सेंसिंग का, वो उनकी इंफॉर्मेशन उनके पास भी रहती है कि जो लोग गए हुए हैं, जो सर्वे कर रहे हैं, प्लस हमारे वक्फ बोर्ड के पास तमाम इंफॉर्मेशन रहती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के ज़रिए से वो काम करते हैं। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या जामिया है, या इन्होंने जो लोग रिक्रूट किए हैं IT कानपुर, IT रुड़की वगैरह ने, इनके डिटेल्स तो अवेलेबल हैं। अगर कोई चाहेगा तो वक्फ बोर्ड से या इन्हीं एजेंसी से जो जहां रेस्पेक्टिव स्टेट में काम कर रही हैं, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, उनकी जो लोग काम कर रहे हैं इस पे सर्वे। ठीक है सर, हो गया सर, पूरा हो गया। जी चौधरी साहब का म्यूट हुआ हुआ है, कुछ बोल रहे हैं। यस, ऑन कर लिया। जी जी जी। On behalf of Zakat Foundation of India and Maharashtra Wakf Liberation and Protection Task Force, and on my own behalf, I, from the depth of my heart, I express my gratitude to Dr. Naqvi for informing about the working of the Central Wakf Council and many rules. Actually, what Dr. Naqvi has told today, it is an eye-opening. Actually, there is a communication gap when one doesn't know anything. Today, Dr. Naqvi has informed many things which I feel that which clarifies many doubts. And actually, the problem of Waqf matters is not only one institution or one body, it is a collective problem of the Muslim community. And therefore, we are all prepared to help the council and the Waqf boards to streamline the working of the boards so that staff be ensured, so that working must be improved in the boards. With these words, I thank Dr. Naqvi for sparing his valuable time for us. Thank you very much. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you very much.
अब आप अनम्यूट करेंगे तो दूसरे स्पीकर अच्छा 10 मिनट का ब्रेक है। अब 11:10 पे हम दोबारा असेंबल होंगे 11:10 पे। ठीक। मोहम्मद खालिद Thank खान जो है एक्स सीईओ पंजाब हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, वो अपनी बातें रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। On behalf of Zakat Foundation of India, Maharashtra Wakf Liberation and Protection Task Force, and on my own behalf, I welcome you for this program. Janab Khalid Sahab has worked as Janab Khalid Sahab has worked as a Chief Executive Officer of combined Punjab, Haryana and Himachal Pradesh, and has vast experience in this field. And I am sure that the participants will be benefited with his talk, and
About 10 minutes will be, I request that 10 minutes may be given to them for question answer, so that if any doubt is there in the minds of anyone, that may be clarified. With these words, I request Janab Khalid Sahab to present his lecture. Thank you. Thank you very much, sir. In Khalid fact, Sahab. hello, Assalamu alaikum. हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आवाज आ रही मेरी? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जी आवाज आ रही, बहुत अच्छी आवाज आ रही। Thank you very much, sir. In fact, I am grateful to you all for giving me this opportunity. With this, I welcome all participants to this session. And in this session, we are going to take up CEO, his terms of office, duties and other officers, conditions of officers, conditions of service of officers and other employees of the Wakf board. Then there is a provision for the CEO to inspect registers, records, etc. And there is another subject, budget of Wakf and its preparation. This followed by audit and submission of accounts of Wakf. And lastly, there will be a talk on board to pass orders on auditor's report. So let's first start with the CEO. Friends, as the designation suggests, Chief Executive Officer, this gives a suggestion that he is the chief officer responsible for executing all the decisions, plans, and scheme of the Wakf board. So he's the main person who actually executes all the programs, plans, and schemes of the Wakf board. Now moving on to his appointment, etc. Section 23 of the Wakf Act requires that there should be a full-time CEO. He should be a Muslim, and he is to be appointed by the concerned state government. And his appointment is to be notified in official gazette. And his appointment is to be made from a panel of 2 names suggested by the Wakf board. And such an officer should not be below the rank of deputy secretary to the state government. It also says that in case of non-availability of a Muslim of that rank, a Muslim officer of equivalent rank may be appointed on deputation. So this simply means that the state government has to start the whole process of recruitment and appointment. For this, the normal procedure is that the post is advertised in media, applications are invited, and then written test or the interview, as the case may be, as is prescribed in the advertisement, that is held, and final selection is made. But here the condition is that this has to be from amongst from a panel of 2 names suggested by the board. So it is further now state government to select one of them and to appoint him as chief executive officer of the Wakf board. This way, the state government is the appointing authority. But since state government chooses one of the 2 names suggested by the Wakf board, so the Wakf board also plays a very important role in selection and appointment of a chief executive officer. As the provision says, that if a Muslim officer of that rank is not available in that state, such an officer can be hired from elsewhere, and he should be of the equivalent rank. As regards term of office, that is for how long he will be there as a chief executive officer, the provision is that such details will be incorporated in the rules, and rules are framed by the state government.
So what will be the term of office, tenure of chief executive officer? This will be prescribed and provided for in the rules. This may be 3 years, this may be 5 years, whatever is provided by the state government in the rules. And rule-making power has been given to state government under section 109 of the Wakf Act. It is this power not only relates to term of office of chief executive officer, but the Wakf Act as a whole, everything that has been prescribed under section 109, rules are to be made for all such issues and subjects by the state government. Now, once the chief executive officer is appointed by the state government, he becomes ex officio secretary also of the Wakf board. That means that he is required, or he's supposed to maintain all records of the Wakf board. He's also required to prepare minutes of all meetings, and he is supposed to assist the Wakf board as a whole in its deliberations and correspondence, etc. Another thing is that once he's appointed by the state government, his services are placed at the disposal of the Wakf board, and he is administratively under the control of the Wakf board. That means he's answerable and accountable to the Wakf board for all his omissions and commissions. And if at any point of time, one thing is that he's supposed to report to the Wakf board and not to the state government after his services are placed at the disposal of the Wakf board. And secondly, if something goes wrong and the Wakf board is not happy with him, then the power of initiating disciplinary action against him rests with the Wakf board. The general rule is that the appointing authority is the removal authorities also. So I believe that in case some disciplinary action is taken, some disciplinary proceedings are completed and concluded by the Wakf board, and when the question of removing him comes, the Wakf board will recommend to the state government to remove him, and the state government will act accordingly after considering all aspects of the case. There is another point which is not specifically covered in the Wakf Act, and this is regarding appointment of CEOs of union territories. As I understand, that this provision, that is provision of section 23, also extends to appointment of CEOs of union territories also. And as we all know that the union territories are under the control of central government, so the CEOs of union territories are to be appointed by the central government. Now we come to another section, that is the following section, section 24. It deals with officers and other employees of the board. Abdul Rahman, sir. Abdul Rahman. So this provision says that the Wakf board will have the power to appoint such number of officers and employees as may be necessary for the efficient performance of its functions, that is functions of the Wakf board. But such appointments will be made in consultation with the state government only. This is the requirement of the law. This means that without approval, here consultation could mean and would mean approval of the state government. So without the approval of the state governments, finality is not given to the recruitment process and appointment of other staff of the Wakf board. There is another provision in the same section, that is section 24, that the procedure for appointment of such officers and employees
their term of office and conditions of service will be what have been provided for in the regulations. Regulations are supposed to be made by the Wakf board, but finally the regulations are approved by the state government. So all such things that are connected with the internal working of the Wakf board, they are provided for in the regulations, and regulations cover the procedure for appointment of such officers, employees, the term of office, and conditions of service. So this is to be done as is provided for in the regulations of the Wakf board. We now come to duties and powers of CEO. This has been provided for in section 25 of the Act, and this requires that, subject to the provisions of the Wakf Act and the rules made under the Act and directions of the board, the duties of the CEO will include investigating the nature and extent of Awqaf and Waqf, calling for an inventory of Waqf properties, accounts, returns, and information from mutawallis. Another duty is inspection of Waqf properties. This is duty and power also. Inspection of Waqf properties, accounts, records, deeds, that is Waqf deeds, or documents relating thereto. Another duty and power is doing such acts as may be necessary for the control, maintenance, and superintendence of Awqaf. This is a very sweeping power and gives a vast leverage to the chief executive officer to do a lot of duties and works. In addition to that, the Wakf board can also give directions in respect of investigation of Awqaf and Wakf, but such actions have to be in conformity with the purpose of the Wakf Act. That Wakf only. That means it has to be in accordance with Manshai Waqif. Next, he has to perform such duties as may be assigned to him by the board. And in addition to this, Wakf board can also delegate some of its powers to the chief executive officer. So once those powers are delegated to the chief executive officer, he has to perform those powers also. In fact, the Wakf board delegates powers not only to chief executive officer, the Wakf board delegates powers to its members, to the chief executive officer, and to other officers also. And such delegation of power is the discretion of the Wakf board. They may do so as they may deem fit. There is a very important power of chief executive officer contained in section 26 of the Act, which deals with power of CEO in respect of orders or resolutions of the board. Here comes the real personality of the CEO into play, and this power also shows that the chief executive officer is not a bandua mazdur of the board. He has been given to exercise his discretion, his reason, his prudence, and his wisdom also in very important matters, such as taking of decisions or passing of resolutions by the Wakf board. Whenever the chief executive officer feels that the board has taken some decision or passed a resolution
which is not in accordance with law, or is in excess or in abuse of powers conferred on the board by this act, that is the Wakf Act, or any other law, or he feels that if that decision or resolution is implemented, this will cause financial loss to the board or to the concerned Wakf or to the Awqaf in general, or if implemented, it will lead to a riot or a breach of peace, or it will cause danger to the human life, health or safety, or, now this is very important, or is not beneficial to the board or to any Wakf or Awqaf generally. So this last provision is very, very important. Whenever he feels that some decision or resolution of the Wakf board will not be beneficial to the board or to any Wakf or Awqaf in general, then what he can do is that he may request the Wakf board, of course in writing, to reconsider its decision or resolution. Once that is done, the Wakf board will call its meeting. The matter will be placed before it. They will consider it, discuss in detail. And if on consideration by the Wakf board, such an order or resolution is not confirmed by a majority of vote of the members present and voting, then the CEO will refer the matter to the state government along with his objection to the order or resolution for the decision by the state government. Because in the scheme of things, CEO is not a final authority to take a final decision. Some other body or authority has to be a final authority to take a final decision. So once that resolution or order is not confirmed by a majority of the members present and voting, the matter will then be referred to the state government by the CEO, and the decision of the state government shall be final. So that means that the CEO is not a blind follower of all the orders and decisions of the Wakf board. He has to apply his mind, and he has to play an important role in the functioning of the Wakf board, functioning of the Wakf board as per law, functioning of Wakf board in the interest of Wakf in general. So this is a very important part of the CEO. Next comes Section 27, where a provision has been made for delegation of powers to CEO, etc. As I have already mentioned, that the board can delegate its powers to chairman, to members, to CEO, or any other officer or servant of the board, or any area committee also. And the board may delegate such powers and duties as the board may deem necessary, except the functions which have been assigned to the Wakf board in C, D, G, and J of subsection 2 of section 32 and section 110. So this C of section 2 of C of subsection 2 of section 32 says that the Wakf board has power to give directions for administration of Awqaf. This power cannot be delegated by the Wakf board to anybody, to the chief executive officer. Similarly, power of the Wakf board to settle schemes of management for a Wakf can also not be delegated to the CEO. Similarly, power to appoint and remove mutawallis is also not delegatable, and the Wakf board will not delegate this power to the CEO. Another function of the Wakf board, which is to sanction the lease of Wakf properties, can also not be delegated to the
CEO by the Wakf board. Similarly, section 110 gives power to the Wakf board to frame regulations. This power can also not be delegated to the chief executive officer, although in practice, it is the chief executive officer who prepares the draft of regulations, hands it over to the Wakf board, and once it is considered and provisionally approved by the board, it is sent to the state government for its final approval. Thus, we see that as far as CEO is concerned, he has a very onerous job, but at the same time, very rewarding also. Onerous in the sense that he has 3 bosses. Normally, an employee has only 1 boss, but in the case of a Wakf board, the CEO has 3 bosses. One is its appointing authority, that is the state government. The other one where he works, that is the Wakf board. And the third one, and the greatest of all authorities, is Allah subhanahu wa ta'ala. The responsibility is like this. He cannot displease the state government because they have the power of removing also, and also they have the power to issue directions to the Wakf board, which of course will apply to CEO also. The second one is that he has to work under the Wakf board, so he cannot displease the Wakf board also, and he has to accede to all reasonable and lawful demands and assignments of the Wakf board. Thirdly and largely, since Wakf properties are dedicated to the Almighty, and it is the duty of the chief executive officer to protect and preserve all the Wakf properties. Since these properties belong to Allah, so he is answerable to Allah subhanahu wa ta'ala also, for which if the duties are performed diligently, prudently, and honestly, he will receive one of the greatest reward by Allah. So his role as a chief executive officer is very important. And it is also onerous in the sense that the Wakf employees, some of them are stationed at the headquarters, some others are in the field. He has to not only maintain efficient and active coordination with them, he has also to monitor their activities, and he has also to maintain discipline amongst them as far as working of the Wakf board is concerned. He is also required to look after all day-to-day activities of the Wakf board. In addition to that, in a big Wakf board such as Punjab Wakf board, Haryana Wakf board, etc., normally there are around 100 calls from several persons and authorities. There are around 50 to 100 files to be cleared by him daily. And there are around 50 to 100 people who come to meet him with their problems. So he has to attend all such duties at the same time. There may be meetings with the state government, there may be meetings of the Wakf board. He has to attend all those meetings. There may be occasions where chairman may not like to attend some of the meetings for one reason or the other, and he may ask the chief executive officer to attend those meetings. So that work has also to be done by him. But if a chief executive officer is a person of vision, he's a visionary. If
he's a capable person, and if he has the capacity to withstand push and pull pressures of various types, then he can really make real and very good contribution to the development of Wakf. With the permission of the organizers, I would like to make a suggestion as far as working of chief executive officers is concerned. Wakfs are meant inter alia for helping the indigent people. And our community, by and large, is educationally indigent. So I feel that the income of the Wakf or the Wakf board can be utilized for educational upliftment of our people also. So let there be a meeting, regular meetings of chief executive officers of all Wakf boards to prepare educational plans for the educational development of our community. Let the resources of those Wakf boards which have excess income be pulled together, a corpus fund be created, and schemes for educational development be prepared, and that fund may be utilized for establishing schools, colleges, and universities under Article 30 of the Constitution of India. So this is my suggestion. Now we come to powers of CEO to inspect records and registers, etc. This power is contained in section 29 of the Wakf Act, and this provision empowers the CEO or any other officer authorized by him to inspect in any public office any records, registers, or other documents relating to a Wakf or movable and immovable properties which are Wakf properties or considered to be Wakf properties or are claimed to be Wakf properties. This is a very important function. In fact, to find out as to which are the Wakf properties which have not been registered with the Wakf board, an exercise has to be undertaken to find out those properties from the records available, land revenue records available with the district authorities. Such information may also be available in some other places, in some other offices. So CEO enjoys that power also to inspect records and registers and documents of any such authority to find out if any Wakf property exists there or not. When this exercise is undertaken by a chief executive officer, the mutawallis or any such person is required to produce all such documents when asked for doing so. That is, if a mutawalli or any other person who is in possession of a record pertaining to a Wakf property, he is supposed to produce all such documents before the chief executive officer or the officer authorized by the CEO in this behalf. It is also provided in the section that government agency or any other organization shall supply such information within 10 working days on a written request. If there is any information with the government agency or any other organization, and if that information is sought in writing by the CEO, that information has to be provided within 10 working days. But as far as asking for such information
is concerned by the CEO, the CEO, before doing that, shall seek approval of the work board. So this must be in the knowledge of the work board that CEO is going to ask for some copies of records from a particular organization or a government agency. So that is all as far as powers of CEO to inspect registers and records, etc. is concerned. Now we come to budget. But as far as budget is concerned, vis-a-vis Wakf board or Wakf, there may be three types of budgets: budget of the Wakf board itself, budget of mutawallis, and budget of those properties which are under the direct management of the Wakf board. Let's proceed with the budget by the mutawallis. Section 44 of the Wakf Act deals with preparation of budget by mutawallis, and every mutawalli is required to prepare a budget of a Wakf for the next year, showing estimated receipts and expenditure during that financial year. In fact, when budget is prepared, it shows what has been the receipts and the expenditure during the last year, and what is estimated to be the receipts and the expenditure during the next financial year for which the budget is prepared. And in such a budget, all the schemes and the heads under which expenditure will be incurred and all the sources from which receipts will be received and income will be received, everything is to be presented in detail before the board. Mutawallis are supposed to present this budget before the Wakf board 30 days in advance from the beginning of the financial year. So that means that towards the end of Feb, the mutawallis should submit their budget to the Wakf board. And such budget should make adequate provisions for carrying out object of the Wakf, that is Mansha-e Waqif, for maintenance and preservation of Wakf property, whatever steps are required to be taken, or whatever arrangements are required to be made for maintenance and preservation of Wakf property, that is also to be detailed in the budget itself, because from most of the Wakf properties, it is supposed that some income will accrue. So that will accrue only when it is properly maintained and preserved. Similarly, there should also be a provision in the budget for discharging the liabilities, if any, and subsisting commitments binding on the Wakf under the Wakf Act or any other law for the time being in force. This also means that a certain portion of the income is to be given by mutawallis to the Wakf board. So that is, there may be some subsisting commitments, that is commitments from the past, or there is a liability of the mutawallis to give some portion of the income to the Wakf board, so that the activities of the Wakf board also carried out efficiently and properly. Now, once the budget has been presented before the Wakf board by the mutawallis, and if the Wakf board finds any item in the budget is contrary to the objects of the Wakf, that is Wakf in respect of which that budget has been presented, or the Wakf Act itself, it may give directions for suitable addition or deletion. That means, if on consideration, it is found that some of the things which have been proposed by the mutawalli in its budget
or contrary to the objects of the Waqf, Manshai Waqif, or to the objects of the Waqf Act, it may ask the Mutawalli to make some additions or deletions as the case may require. Similarly, if a Mutawalli in the course of financial year finds it necessary to modify some of the provisions of the budget, he may submit a supplementary or revised budget to the board. That will also be considered by the Waqf board, and this will be treated as a revised budget or supplementary budget. Next, we come to preparation of budget under direct management of the board. So let's first see what are the properties that are under the direct management of the Waqf board. There may be two types of properties which may be under the direct management of Waqf board. One is where there is no Mutawalli as such. As such, there is no Mutawalli of a Waqf property, then Waqf board has no other option but to take those properties under its direct management. And such is the situation at a large scale in the Waqf boards of Punjab, Haryana, and Himachal Pradesh. It is estimated that around 98% of the Waqf properties are under the direct management of those Waqf boards, and only 2% or so are the Mutawallis there. So such Waqf boards play a very significant and important role in management of those Waqf properties under the guise of management, under the guise of direct management of Waqf properties by the Waqf boards. In such a case, budget of such properties is supposed to be prepared by the CEO, and for all other purposes, for all other practical purposes, CEO here works as a Mutawalli of those properties. So as the Mutawallis prepare the budget of the properties with them, the CEO prepares budget for the properties which are under the direct management of the Waqf board, and all such things which are applicable to a Mutawalli apply to CEO also. He has to see that the budget is prepared in such a form and at such time as may be prescribed in the rules. Again, rules made by the state government. So the procedure for preparation of the budget is to be explained in the rules, and the time at which it is to be prepared and presented is also to be provided for in the rules. The budget will show the estimated receipts and expenditure of each of Awqaf under the direct management of the board, and the CEO will submit the budget to the board for approval. CEO along with the budget will also attach a statement giving details of increase, if any, in the income of each such Waqf and the steps taken or proposed to be taken for its better management. That is better management of the Waqf properties under direct management, and the results accruing therefrom during the year. So this means that he will also elaborate the steps taken for better management, and if he takes better management, what additional beneficial results will accrue from those steps. As a Mutawalli does, CEO is also supposed to keep regular accounts and ensure proper management of every such Waqf. In fact, what happens that in such a Waqf board, where there are Waqf properties under direct management, they have two types of accounts. One is the account of Waqf board and the other is the account of Awqaf. So all such properties which are under the direct management of the Waqf board, a separate account, bank account is maintained for them. It also provides for that wherever a reference is made to in respect of a Mutawalli, that is equally applicable to CEO also as far as preparation of budget is concerned.
Now there comes the aspect of audit of such Wakf. The audit of such Wakf shall be undertaken by the state examiner of local funds. That is, the audit of Wakf which are under the direct management, it shall be undertaken by the state examiner of local funds or any other officer appointed by the state government. They will audit the accounts of such Wakf. While this audit is undertaken, there will be no consideration whether these Wakf has any income or not, irrespective of income of the Wakf. Whether any income accrues therefrom or not, audit will be done by the state examiner of local funds. When this audit is undertaken, then the administrative charges will be provided to the Wakf board from such Wakf, and the amount of such charges will be as specified by CEO. CEO may specify the amount of charges, but such charges may not exceed or cannot exceed 10% of gross annual income of the Wakf in respect of which audit is being made. Now we come to submission of accounts of Wakf. This has been provided for in section 46 of the Wakf Act. It is required that before 1st July every year, every Mutawalli will prepare and furnish to the Wakf board a full and true statement of accounts in such form and containing such particulars as may be provided by the regulations. Regulations means regulations which have been prepared by the Wakf board for its internal working. And this statement will contain information of all monies received or expended during the last or previous financial year. And closure date of annual accounts may vary at the discretion of the Wakf board. Wakf board has the power to fix the closure date of annual accounts of submission of such accounts. Now we come to audit of accounts of Wakf. This has been provided for in section 47 of the Wakf Act. This means audit of the accounts which have been submitted by the Mutawallis. The provision is that where there is no income from the Wakf or the income is less than 50,000 during the year, the submission of a statement of accounts is sufficient. Nothing else is required. But 2% of such Wakf shall be audited annually by an auditor appointed by the Wakf board. That means audit of all the Wakf properties with the Mutawalli or Mutawallis will not be carried out. Only 2% of all such Wakf will be audited, and that audit will be done by the auditor appointed by the Wakf board. And where the income, annual income is more than 50,000,
the audit will be done at such intervals as may be prescribed, and this audit will be done by an auditor appointed by the board from out of the panel prepared by the state government. Here, the Wakf board will not have open powers, but the Wakf board has to select auditor from out of the panel prepared by the state government, and that auditor will audit the accounts of those Wakfs whose annual income is more than 50,000. And the scale of remuneration to such auditors shall be what is specified by the state government. That is, whatever is to be paid to the auditors for their work, this will be decided by the state government. In addition to this, power has also been given to the state government to cause an audit of account of any Wakf. If the state government feels or they have some information that something wrong has been done in case of a particular Wakf, then the state government suo motu may also initiate or cause audit of a particular Wakf by the state examiner of local funds or any other officer designated for that purpose by the state government. In doing so, the state government is required to intimate the Wakf board suitably that they intend to cause an audit of that particular Wakf. Once that audit is completed, audit report is submitted to the Wakf board, wherein it is all cases of irregularities, illegal or improper expenditure, etc. are specified. It also specifies if there has been any neglect or misconduct. And the auditor is also supposed to point out if there has been any particular employee or person responsible for that neglect or mismanagement or irregular expenditure, etc. The audit report will also say as to how much amount should be recovered that particular person. As far as cost of audit of such a Wakf is concerned, that is to be taken from the funds of the Wakf whose audit has been done. But this cost will be as per the state government norms, but it cannot be more than 1.5% of net annual income of such Wakf. There is last subject or item of this session, which deals with the passing of orders on auditor's report by the Wakf board. The relevant provisions are contained in section 48 of the Wakf Act. When the auditor's report is presented before the Wakf board, the Wakf board examines that report, and if the board may call for explanation of the person concerned, who is responsible for making irregularities,
such a person may be a mutawalli also, and the Waqf board may pass such orders as it may think fit for recovery of the amount certified by the auditor. If a person who has been asked by the Waqf board to make good that loss is aggrieved by such an order, he may go to the tribunal for modification or setting aside of the order of the Waqf board. This has to be done within 30 days from the receipt of order of the Waqf board by the mutawalli or any concerned person. After the tribunal is moved by such an aggrieved person, the tribunal takes evidence to confirm, and then the tribunal comes to a decision either confirming the order of the Waqf board or it modifies the order of the Waqf board. Modification may also include setting aside of the order of the Waqf board. It is at the discretion of the tribunal that they may award costs also to either party to the case. Here is a bar on the tribunal that the tribunal will take cognizance of the request or appeal of the agreed party only when the amount which has been certified by the auditor is deposited in the tribunal by the aggrieved party. So aggrieved party has to deposit the amount involved in the tribunal before the tribunal can start the proceedings. Another bar on the tribunal is that in such cases, tribunal can't grant stay. After the matter is adjudicated upon by the tribunal and it is decided that recoveries are to be made from the person who was enrolled in irregularities, then the options are that the person who is required to pay those amounts, he may do so of his own. He may do so at the request of the Waqf board or at the direction of the Waqf board, or such amounts may be recovered from those persons as land revenue arrears. So that's all for this session. Thank you very much. हम सब लोग दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको वक्फ की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, वक्फ की तरक्की के लिए हम सबको यकजा होने और अपनी सारी सलाहियतों को उसके लगाने के लिए तौफीक अता फरमाए और हम सब मिलकर वक्फ के जरिए कौम की तकदीर और कौम का मुस्तकबिल बदलने और उसको संवारने के लिए काम कर सके। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन। अब अब्दुल रहमान साहब। जी सर। अब्दुल रहमान जी सर। हाँ क्वेश्चन। हाँ सर, 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन होंगे ना? हाँ सर, 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको पूछ लेते हैं। एक साहब ने कहा व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द पावर ऑफ द सीईओ एंड द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड? In fact, it is the same person. There is no difference between the same person functions as CEO and the secretary. Powers are not separate. As far as secretary is concerned, secretary is supposed to maintain all records. That is the main responsibility of a secretary. But when he acts as CEO, then he is supposed to execute all the decisions
and schemes and plans programs of the Wakf board. So for all practical purposes, there is no difference. But when he acts as secretary, he is secretary of the board. He prepares minutes of all meetings and he maintains all records of the board. So that is the main responsibility of a secretary. एक राशिद अंसारी साहब वो कह रहे हैं why most वक्फ board are without CEOs and how it can be dealt with. CEOs are supposed to be appointed by the state governments, and maybe that some state governments do not take proper interest in the administration of Wakf and Wakf boards. So that may be the reason. There does not seem to be any other reason. But the moot question is that whether we as a community are aware and alert and vigilant to the extent as is required. If we are vigilant, if we exercise our pressure on the state governments, that problem can be solved to a great extent. And for being aware and vigilant, we have to increase the quantum of our higher education in our community. At present, you know that only around 5% of our people get higher education, and that too may be of not very good quality in some cases. So this has to be increased phenomenally only when we can become an aware community. Thank you. सर एक क्वेश्चन और है साहब पूछे हैं, कैन वक्फ बोर्ड इन्वोक सेक्शन 40 ऑफ वक्फ एक्ट अगेंस्ट ए दीनी मदरसा टू रजिस्टर इट एज ए वक्फ इंस्टीट्यूशन though it was registered under Indian Trust Act or Societies Registration Act? My understanding of the subject is that if a particular organization is registered as an association or an organization under the Societies Registration Act, the Wakf board cannot force such an organization to be registered with the Wakf board. Okay. एक राशिद अंसारी साहब का दूसरा क्वेश्चन है, इज देयर ए पॉसिबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए डिप्यूटी मुतवल्ली अंडर द लॉ? Would you please repeat the question? Is there a possibility of appointment of a deputy mutawalli under the law? Law does not provide for any deputy CEO, but there is a provision for the Wakf board to appoint other officers, and other officers may include deputy CEO also. Okay. ठीक है सर, हो गया। सारे हो गए क्वेश्चन? अच्छा, खालिद साहब मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। Please sir, please, my pleasure. Chief Executive Officer is ex-officio secretary the Wakf board, and there may be a situation situation may arise that Wakf board may plan to remove the CEO. Then it will take some disciplinary actions. Then it will be very embarrassing for the CEO as ex-secretary of the board to record the minutes of the meeting, because the deliberations of the board, secretary has to be there in the deliberations. But members of the board may not like that against whom action is being taken. He may sit in the meeting. So this is a very peculiar situation. So you are explain it. Yes, sir. You are very right, sir. Yes. In fact, when disciplinary proceedings are concluded and a final decision is taken in that regard, the person who has been charged, he is not supposed to be present in that meeting. Right. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. Now, I'm grateful to Muhammad Khalid Sahab for sparing his valuable time for this detailed discussion and presentation on the functioning of the Chief Executive Officer, because he is the key person for the working of these Wakf boards.
What he has explained to us that he has very difficult job to perform because he has three bosses, state governmental, state Waqf board, and Allah subhanahu wa ta'ala. So he has a very difficult time to discharge his duties honestly and sincerely. With these words, on behalf of the Zakat Foundation of India and Maharashtra Wakf Liberation and Protection Task Force, and on my own behalf, I very sincerely thank Muhammad Khalid Sahab for sparing his valuable time. I'm sure his lecture will benefit all the participants, and what mission is there in his mind. It is the mission of all the community members, and inshallah we will work together for the betterment of the performance of the work boards and to protect the work properties in this country. Thank you very Thank much. you very much, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. In fact, I'm grateful to you for giving me this opportunity. I had worked under Dr. Sayyid Zafar Mahmood Sahab when I was CEO of the Punjab Waqf Board. He was the administrator of that Waqf Board. And I'm grateful. Right. In fact, I'm very, very thankful to Dr. Saab, to Chaudhary Saab and his team. Thank you very much. Shukriya. Thank you. Thank you. Now we will meet at 12:20 again. Janab Farid Tungekar Saab is waiting for his time to speak. We will start at 12:20. Thank you. Chaudhary Saab, can you hear me Yes. clearly, right? Yes, clear. I just wanted to check. Right. Thank you. Thank you. After 5 minutes, we may start. Start in 5 minutes, no problem.
Let me know when you want me to start. Just in a minute's time, we may start. Okay. In a minute's time. अरे असेंबल होने शुरू हो गए हैं सारे लोग दोबारा. शुरू किया जाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं जनाब मोहम्मद फरीद तुंगेकर साहब, जो कि महाराष्ट्र वक्फ लिबरेशन मैनेजमेंट के शुरू से ही एक्टिव मेंबर रहे हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस संभाले हुए हैं, आज हमारे बीच में हैं. और आप जो है इस सेशन में डील करेंगे मुतवल्लीज के फंक्शंस के बारे में, क्योंकि अभी जो लेक्चर हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, उसी के साथ ही मुतवल्ली का रोल भी बहुत अहम है. और इस अहम रोल को अहम पर्सन फरीद साहब एक्सप्लेन करेंगे. और हमारे पार्टिसिपेंट्स को अगर कोई डाउट होगा तो बाद में 10 मिनट का टाइम मिलेगा, वो उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो कोशिश होगी कि उनके सवालों का जवाब माकूल दिया जा सके. मैं फरीद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात शुरू करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. I just want to recap some of the definitions because we will be referring to them in the course of the lecture. पहला तो वक़फ़ और औक़ाफ़, translated as confinement, detention, holding or prohibition. Legally, it means to protect something by preventing it from becoming the property of a third person. In juristic terms, Wakf is a special kind of philanthropic deed in perpetuity that is exercised in a non-perishable tangible property. By designating the specific categories of beneficiaries to receive its
revenue, usufructs or revenues. Importantly, Wakf principles, objectives and method of application make it unique from all forms of charity, endowments and alms. The meaning implied here is that the property remains in perpetuity under the ownership of its custodian, the mutawalli, and to be not alienated in any way. The Wakf Act defines the permanent dedication by any person of any movable or immovable property for any purpose recognized by the Muslim law as pious, religious or charitable, and includes a Wakf by user, by any name indicative as Wakf in revenue records, by grants, that is inam, including Masharatul Khidmat, and of course the family Wakf, to the extent to which the property is dedicated for any purpose recognized by Muslim law as pious, religious or charitable. The Waqif, any person making such dedication, ownership transfers from the person making such dedication to Almighty Allah. Now, the person interested in Waqf, this is a very important person. It can be you, me, anyone. So any person who is entitled to receive any pecuniary or other benefits from the Waqf, and includes any person who has a right to offer prayer or to perform any religious rites or any other religious institutions connected with the Waqf, or to participate in any religious or charitable institution under the Waqf. The Waqif, so Waqif can also become a person of interest, and any descendant of Waqif and the Mutawalli. So this person of interest is very important person actually, because he can change the way the Waqfs are administered. He can change the way the management of Waqf, and he can contribute in a correct way to the betterment of the society. Now we come to appointment of Mutawallis. Who can be a Mutawalli? Basically, any person who is a citizen of India or any appointed either verbally or under any deed of or instrument, that is under Waqfnama, if he is appointed as a Mutawalli. This is covered under section 25(2) and 32(1) of the Waqf Act. So by which a Waqf has been created or by a competent authority. So he can become a Mutawalli by appointment from a competent authority. In this case, it can be the Waqf board under section 69, or by virtue of any custom. Person who is a Naib Mutawalli, Khadim, Mujawar, Sajjad Nashin, Amin, or other person appointed by a Mutawalli to perform the functions of a Mutawalli. So a Mutawalli can appoint another Mutawalli to perform the functions of a Mutawalli. Any person, committee or corporation from time being managing or administrating any Waqf or Waqf property. So he can be a member of a committee. So he is a Mutawalli, can be appointed by a committee. In certain cases under section 63, Waqf board can appoint any person as Mutawalli if no one is present to be appointed under the terms of the Waqf. Again, we refer to section 25(2) and section 32(1) here. To act as Mutawalli for such period and condition as it may think fit. Now, Mutawalli can also be person interested in a Waqf. Means any person who is entitled to receive any pecuniary or other benefits from the Waqf, and includes any person who has a right to offer prayer
or to perform any religious rites in a mosque, Eidgah, Imambara, Dargah, Khanka, Pir Kha, Karbala, Maqbara, graveyard, or any other religious institution connected with Wakf, or to participate in any religious or charitable institution under the Wakf. The Waqif, a Mutawalli can also be, Waqif can also be a Mutawalli, and any descendant of the Waqif and the Mutawalli. So what does section 25(2) state? It says, in exercising the powers of giving direction under the subsection 1 in respect of any Waqf, the board shall act in conformity with the directions of the Waqif in the deed of the Waqf, the purpose of Waqf, and such usage and customs of Waqf as are sanctioned by the school of Muslim law to which the Waqf belongs. And the same thing is section 32(1) says the same thing. So no authority or tribunal nor any court can go against the provisions of section 25(2) or section 32(1) as far as Mutawallis are concerned. The Waqfnama and the direction of Waqf is the supreme document. Now, section 63 of the Waqf Act, the board may appoint Mutawalli of a Waqf when there is no one to be appointed under the terms of the deed of the Waqf. So if it is not mentioned in section 20 in the deed Waqfnama, then the board can appoint a Mutawalli in certain conditions, or where the right of any person to act as Mutawalli is disputed, the board may appoint any person to act as Mutawalli for such period and on such conditions as it may think fit. So the board also has a power to appoint Mutawalli. Now, under section 69 of the Waqf Act, where the power of the board to frame scheme for administration. Now, administration means appointment of Mutawalli to manage the Waqf. Where the board is satisfied that an inquiry under section 70, whether on its own motion or on the application of not less than 5 persons interested in any Waqf. So again, we are talking about 5 persons interested in any Waqf. To frame a scheme for the proper administration of Waqf, it may by an order frame such scheme for the administration of Waqf after giving reasonable opportunity and after consulting with the Mutawalli or others in the prescribed manner. So when the scheme is being framed, you need to give the names of Mutawallis who will be looking at after the objectives, aims of the Waqf and the management of the Waqf. So under the scheme also, you can appoint a Mutawalli. A scheme framed under subsection 1 for the removal of Mutawalli of the Waqf holding office as such immediately before the date on which scheme comes into force. Any removal of hereditary Mutawalli. So there is a hereditary Mutawalli mentioned in the Waqfnama shall be replaced by the next in hereditary person. So you have to replace, if it is in the Waqfnama, Mutawalli by hereditary Mutawalli by a next in line hereditary Mutawalli. Every order shall be published and binding on the Mutawalli, and all person interested in Waqf, person aggrieved can approach tribunal, but the tribunal cannot stay the order. Now, under section 70, any person interested in Waqf, again we have this person, may make an application to the board supported by an affidavit to institute an inquiry relating to the administration of the Waqf. And if the board is satisfied that there are reasonable grounds for believing that the affairs of the Waqf are being mismanaged by the Mutawalli, the board shall take appropriate action in appointing somebody else to act as Mutawalli.
Section 66 of the Wakf Act. Whenever a deed of Wakf or any degree or order of a court of any scheme of management of any Wakf provides that a court or any authority other than the board may appoint or remove mutawalli or settle or modify such scheme of management or otherwise exercise superintendence over the Wakf order or scheme, such powers aforesaid shall be exercisable by the state government in consultation with the board if the state board is constituted. So wherever there is a state board in the country, they also have a power to appoint mutawalli. In section 69, the board has power to settle scheme of management of Wakf. And in section 27, the board can delegate its power to CEO or any other committee, except the power to frame the scheme lies with the board. This is very well clear in section 32D by my colleague, previous speaker, Muhammad Khalid Khan. So the board is the only exclusive authority that has the power to appoint mutawallis through appointment of the scheme. But the state government can override them, the board, to power to appoint the mutawalli. Now the removal of mutawalli. Section 64 of the Wakf Act. Notwithstanding anything contained in any other law or the deed of the Wakf. So again, section 25(2), section 32(1). The board may remove a mutawalli from his office if such mutawalli has been convicted more than once, or there is a criminal breach of trust or moral turpitude, or is of unsound mind, or is insolvent, or addicted to drinking or making liquor, or addicted to any narcotic drugs, or is employed as a paid legal practitioner on behalf of or against the Wakf. Now this thing is employed as a paid legal practitioner on behalf of or against the Wakf. So in my opinion, this itself says that the lawyers who are for petitioners or for defendants in the Wakf tribunal or in matters related to Wakf, they cannot become mutawallis. Or has failed to maintain and submit regular accounts for 2 consecutive years. So a mutawalli can be removed if he is not submitting audited reports, and if he doesn't submit those audited reports for 2 years consecutively, under this section, you can remove him. The person interested in a Wakf can raise this point and he can ask the mutawalli to be removed. So this law, Wakf Act 1995, is a very robust act for the better management and administration of the Wakf. It's only if we can understand this act and act according to this act, whether it is a board or the state government or the mutawalli, then I think we have solved 90% of our problems in development of the Wakf property. Because we can use this act for the benefit of the community, as in each individual is responsible, has an obligation for the betterment, to create, to submit, to contribute to the betterment of the society, and especially the Muslim society. Now, the mutawalli can also be removed if he is interested directly or indirectly in subsisting lease in respect of any Wakf property. So if he's a mutawalli and he gives lease to his brother
the Wakf land, he can be removed. Or he can be removed on any work being done for the Wakf, or is in areas in respect of any sum due by him to such Wakf. So if he has not paid the normal percentage that he needs to pay to the Wakf board, then also he can be removed. Or continuously neglects his duties or commits any misfeasance, misappropriation of any money or other Wakf property, or willfully and persistently disobeys the lawful orders made by the central government, state government, board under any provision of this act or rule or order made thereunder, or misappropriates or fraudulently deals with the property of Wakf. A mutawalli, if he tries to sell the Wakf property, he can be removed also. The act itself is so robust in removing these corrupt mutawallis that people have to people have to become person of interest and exercise their right to protect and liberate the Wakf properties. The removal of a person from the office of mutawalli shall not affect his personal rights, if any, in respect of the Wakf property, either as a beneficiary or in any other capacity, or his right, if any, as a sajjadi nashin. No action shall be taken by the board unless it has held an inquiry into the matter in a prescribed manner. So there are rules and regulations which have been formulated to remove mutawallis. If I'm not mistaken, I think the CEO has to fill a form 27 under the rules and regulation and give a notice to the mutawalli and asking explanation why he cannot be removed. No action shall be taken by the board unless it has held an inquiry into the matter or in a prescribed manner, and the decision has been taken by majority of not less than 2/3 of members of the board. So the board has a lot of power here in removing the mutawalli. But the board cannot remove a mutawalli who under the Wakf deed is appointed, and he can be removed, and another one in hereditary has to be replaced by the person who's been removed. So the Wakfnama is the most important document, again I say, which says, and if it is said in the Wakfnama that the administration or the management of the Wakf has to be in a certain family line, then the person from that family who's a mutawalli can be removed, but it has to be replaced by that family member, by another family member. A mutawalli who is aggrieved by an order may within 1 month from the date of receipt of order appeal against the order to the tribunal, and the decision of the tribunal on appeal shall be final. The board may, in the interest of Wakf, by an order, suspend such mutawalli until the conclusion of the inquiry for a period not exceeding 10 days. Except after giving mutawalli a reasonable opportunity of being heard against the proposed action. So the board has to give mutawalli a reason to appeal, to write to the board, explaining his point of position. When the aggrieved mutawalli has approached tribunal, the board may make an application to the tribunal for the appointment of a receiver to manage the Wakf pending the decision of the appeal. The tribunal shall appoint a suitable person as the receiver to the managed Wakf and direct the receiver so appointed to ensure that customary or religious rights of the mutawalli and the Wakf are safeguarded. Where a mutawalli has been removed from his office, the board by order direct the mutawalli to deliver possession of Wakf property
to the board or to any officer authorized by the board. A mutwalli of a Wakf removed from his office under this section shall not be eligible for reappointment as a mutwalli of that Wakf for a period of 5 years from the date of such removal. In my opinion, it says that you cannot be appointed as mutwalli for that particular Wakf. But a person who has committed for one Wakf something, misappropriation or whatever it is, how can he be eligible to be appointed as a mutwalli in another Wakf? So this point, I'm a little not very comfortable with this 5 years of ban on mutwalli for that particular Wakf. I think he should be banned from any Wakf. Section 61, if a mutwalli fails to register a Wakf, he can be removed or conceals the existence of a Wakf or fails to provide the information required or provides false or misinformation or fails to allow inspection of Wakf properties, accounts, records or deeds and documents, or fails to deliver possession of any Wakf property. Section 68, if ordered by the board or tribunal, or fails to carry out the directions of the board, then the mutwalli shall be punishable with imprisonment of a term which may extend to 6 months and also fine of 10,000 rupees upon complaint made by the board or an authorized board officer. Here, if a mutwalli fails to register Wakf, as you all know that there are many Wakfs which are not registered. They are registered under Charity Commissioner. And according to the law, they are deemed to be registered as Wakf. So, a mutwalli who fails to register those Wakfs, especially masjids, they are still under Charity Commissioner. When it is to be deemed registered under Section 43 of the Wakf Act with the Wakf Board, then he should be removed under this Act 61 and make sure that the Wakf, the Wakf which is registered under Charity Commissioner is registered with the board. Now we come to another topic, same topic of related to mutwalli, suppression, supervision of committee of management. Committee of management is a group of people who are authorized to run a Wakf, and they are actually as an individual they are mutwallis. Direct management of Wakf by the board. When no suitable person is available for management of Wakf, or when the board is satisfied that in the interest of Wakf, that filling up vacancy for Wakf is prejudicial, detrimental to the interest of Wakf, the board may take over the management of Wakf for a period not more than 5 years after notification in official gazette, and provided the board has evidence to prove that the current management has contravened the provisions of Wakf Act. The state government may, on its own motion or on the application of any person interested in Wakf. So again, we have this super person, any person interested in Wakf, call for records of any case for the purpose of satisfying itself as to the correctness, legality, or propriety
of the notification issued by the board. Board shall send the state government a detailed report in regard to every Wakf under its direct management, giving income of Wakf, steps taken to improve management, period under board, and the reason for not entrusting the management to a mutwalli or committee. Now, I don't know how many state Wakf boards have got direct management of Wakf. Any committee for supervision and management of a Wakf, so this is covered under section 67 of the Act, will continue until its expiry or is superseded by the board, whichever is earlier, provided the committee is working under direction, control, and supervision of the board. If the board is convinced that the scheme is inconsistent with any provision of this Act or any rule made thereafter, or with the directions of the Wakf. So what was the direction of the Wakf regarding the management administration of the Wakf? So they have to take into consideration the direction of the Wakf. It may at any time modify the scheme in such manner as may be necessary to bring it in conformity with the directions of the Wakf or the provisions of this Act and the rules made thereunder. So they have to correct the schemes to bring it in conformity with the law and with the Wakf now. In spite of anything contained in this Act and in the deed of the Wakf, if the board feels the Wakf is being mismanaged by the committee or individual member, which is a mutawalli, then in the interest of proper management of the Wakf, the board can pass an order for suspension of the committee, and in such case, any direction of the Wakf insofar as it relates to the constitution of the committee shall cease to have any force. Provided before passing an order, the board will call upon the committee or individual member, mutawalli, to show cause within 1 month. The aggrieved party, committee or individual member like mutawalli, can approach the tribunal against the board order within 60 days. The tribunal shall have no power to suspend the operation of the order made by the board related to committee pending such appeal. So the board can suspend the committee. The tribunal cannot override them, even if it is under the appeal. The board shall, whenever it supersedes any committee, constitute a new committee of management simultaneously with the order. So when they pass an order to suspend a committee and take over the supervision, they have to at the same time constitute a new committee of management simultaneously with the order in conformity of the Wakf rules and the Wakf Nama. Individual member removed by the board can approach the tribunal. The tribunal may confirm, modify, or reverse the order made by the board, and the order made by the tribunal in such appeal shall be final. So, just to try to understand this section 67, the provision of the Act covers 3 aspects related to the management of Wakf. One is the scheme itself. Second is the committee formed under the scheme. And the third is the mutawalli who may or may not be part of the committee. You can have a normal member also in the committee. Firstly, the board can amend the scheme to bring in conformity with the Act and direction of the Wakf, which is the direction of the Wakf now. Secondly, the board can replace the committee only in the interest of proper management of the Wakf. In this case, the tribunal cannot stay the order of the board. Thirdly, the board can suspend or remove a mutawalli. In this instance, the tribunal may confirm, modify, or reverse the order made by the board
and the order made by the tribunal in such appeal shall be final. In all the cases, the board cannot go against the provisions of section 25(2) or section 32(1). If the mutawalli removed is hereditary, he needs to be replaced by person next in hereditary succession of mutawalli, so removed. Under section 38, mutawalli and committee can be removed also. Notwithstanding anything contained in this act, the board may, if it is of the opinion that it is necessary so to do in the interest of the Wakf, appoint on whole time or part-time basis or in an honorary capacity, subject to such conditions as may be provided by regulation, a Muslim executive officer. Don't mix this with the chief executive officer. He's a Muslim executive officer. It's nothing to do with CEO. With such supporting staff as it considers necessary for any Wakf, having a gross annual income of not less than 5 lakh rupees. So the Wakf, which has an income of more than 5 lakhs or 5 lakhs, then the board can appoint an executive officer to manage if it feels that it is required in the proper management of the Wakf. Every executive officer appointed shall exercise such powers and discharge such duties as pertain only to the administration of the property of the Wakf, under the direction, control, and supervision of the board. Executive officer shall not interfere with any religious duties or any usage or custom of the Wakf sanctioned by the Muslim law. The board may suspend, remove, or dismiss the executive officer or member of his staff from his post. They also have a power to remove the executive officer that they appointed. And the aggrieved party can approach the tribunal again. Now we come to delivery of records. Delivery of records of Wakf in possession of mutawalli or committee. Where any mutawalli or committee of management has been removed by the board in accordance with the provisions of this act, or any scheme made by the board, the mutawalli or the committee so removed from the office shall hand over charge and delivery of the records, accounts, and all properties of the Wakf, including cash, to the successor mutawalli or the successor committee within 1 month from the date specified by the order. So the committee of mutawalli who's been removed by this order have to hand over their charge to the successor committee or to the mutawalli, successor mutawalli. Where any removed mutawalli or committee after lapse of 1 month fails to hand over the records or creates obstruction to successor mutawalli or committee, then any member of the successor committee with an application accompanied by a certified copy of the order of the board, certified copy of the order appointing them as the successor mutawalli or committee, can approach any magistrate, district magistrate or assistant district magistrate or sub-divisional magistrate in whose jurisdiction the Wakf property are situated, for order directing the delivery of charge and possession of all such records to the successor mutawalli or committee, as the case may be, within such time as may be specified in the order. Where the removed mutawalli or any member of the removed committee omits or fails, in spite of that, if they again fail to deliver the records in possession of all records, as the case may be, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months, or with fine which may extend to 8,000 rupees, or both. Whenever any removed mutawalli or any member of the removed committee omits or fails to comply with the orders made by any magistrate, police assistance may be authorized by any magistrate. No order appointment of successor mutawalli or committee shall be called in question
in the proceedings before any magistrate under this section. Nothing contained in this section shall bar the institution of any suit in a competent civil court by any person aggrieved by an order made under this section to establish that he has the right, title, and interest in the properties specified in the order made by any magistrate. So he has the right, aggrieved person has a right to approach any court. Under section 105, it shall be lawful for the board or the CO to furnish from any person having the custody of any record, register, report, or other document relating to a Wakf or any immovable property which is Wakf property. So there are many Wakfs, or rather, there are many which are not been registered. Then any person having a custody of this record, the CO can ask him to furnish that record. Now we come to the most important obligations of the Mutawalli, that is the duties of the Mutawalli. Today, Mutawallis think that it is their kingdom. Wakf is their kingdom. Least they forget that they are the protectors, they are the managers, they are the administrators who have been assigned a duty to protect and develop the Wakf properties. Under section 36, so all Wakf, again, I want to just repeat this again. All Wakf created before the commencement of the Act are deemed to be registered under section 43. So in Maharashtra, before the 1995 Act, in the 50s, in early 1950s, there was the Bombay Charitable Trust Act. And in that Bombay Charitable Trust Act, under section, I think 16 or 19, a Wakf, definition of Wakf was there. So people, there were trusts and Wakf. The masjid were again defined as Bombay Public Trust Act, under Bombay Public Trust Act. So it was under the, they thought it is a trust, but actually it is a Wakf. So these type of Wakf, which are now known as trust or are still remaining as trust, are deemed to be registered under section 43. So anybody not registering these kind of trusts is liable to be prosecuted under certain sections of the Wakf Act. So under section 36, Mutawalli should provide a description of the Wakf properties, the gross annual income from such properties, land revenue, cess, taxes annually payable, an estimate of annual expenses such as the salary of the Mutawalli, allowances to the individuals, amounts set aside for religious purpose, charitable purpose, and any other purpose. Copy of the Wakf deed. If Wakf deed is not available, then full particulars as far as they are known to the applicant of the origin, nature, and objects of the Wakf. Information provided by the Mutawalli shall be signed and verified in the manner provided in the Code of Civil Procedure 1908. So you have to submit an affidavit when you're submitting all these documents, and that affidavit is under the Code of Civil Procedure 1908 for signing and verification of pleadings. So it is very important for the Mutawalli to provide the description of Wakf properties. Now, it is unfortunate state that many Wakf properties that are listed in the WAMC are not correct. I'm sorry to say, I disagree with Professor Dr. S.A. Naqvi Saab. And we have found many cases where it is written property 0, and down there is a list of all the survey numbers of that property. So how can it be that the property is 0 and when you have all the documentation related to survey numbers?
If a mutawalli fails to register Wakf or conceals the existence of a Wakf or fails to provide the information required or provides false or misinformation, then mutawalli shall be punishable with imprisonment for a term not exceeding 6 months and also fine or both. It is absolutely imperative, it's absolutely necessary that details of Wakf property should be registered with the Wakf administration. Failure to register leaves a window of opportunity for scrupulous lawyers. I will, when we cover section, if you see section 51, it is there. In alien, we'll cover in further in the top under alienation of Wakf property. The mutawalli shall make every effort to protect the properties of the Wakf and shall under no pretext attempt to transfer temporarily or permanently any Wakf property. Under section 44, every mutawalli of Wakf shall in every year prepare in such form and such time as may be prescribed a budget. Now this section has been covered in detail by my colleague Muhammad Khalid Khan Sahab, the previous speaker. So I shall just briefly go through it. Under section 50, so in the course of financial year, the mutawalli finds it necessary to modify the provisions made in the budget in regard to receipt or to distribution of amounts to be expended under the different heads. He may submit to board a supplementary or revised budget. So he has an option to correct the budget that he had submitted earlier. Under section 50, it shall be the duty of every mutawalli to carry out the directions of the board in accordance with the provisions of this act. So we're covering duties of mutawallis. To furnish such returns and supply such information or particulars as may from time to time be required by the board in accordance with the provisions of this act, rule or order made thereafter. To allow inspection of Wakf properties, accounts or records or deeds and documents related to the Wakf, and to discharge all public dues, and to do any other act which he is lawfully required to do by or under this act. A mutawalli shall make full utility of the land and other properties in accordance with the provisions of the Wakf Act 1995 as amended from time to time, and shall make efforts to build schools, colleges, nursing institutions, dispensaries, maternity homes, child welfare centers, and or such other similar charitable institution in India for the benefit and use of deserving people belonging to any creed or culture and with reservation for Muslim community. So that is one of the duties of a mutawalli, to develop the Wakf land which he has been authorized to manage it. Now, under the section of mutawalli to pay cost, every mutawalli shall keep regular accounts and submit to board for each financial year under section 46, which was covered earlier in the earlier talk. Failure to submit for 2 consecutive years, the mutawalli can be removed under section 64. That is what I just mentioned earlier. The cost of audit shall be borne by Wakf fund under management of mutawalli. The auditors shall, under section 47, submit detailed report to board, clearly mentioning any irregularities for further action by board. The board shall examine the auditor's report under section 60. Under section 48, again it was covered by Muhammad Khalid Khan Sahab, and may call for explanation of any person in regard to any matter mentioned therein, and shall pass such orders as it thinks fit, including orders for the recovery of the amount certified by the auditor. The mutawalli or any person aggrieved by the board order within 30 days can approach the tribunal, provided the amount to be recovered is to be deposited with the tribunal first. So before he can approach the tribunal, he has to deposit the amount which is
which the board has claimed that he needs to be, has to deposit that amount which the board has specified. If the amount remains unpaid, every attachment made under this section shall be made in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure 1908, as if it were an order for the attachment made under the provision of the said code. So under CPC, order can be passed for the attachment of the code. Under section 49, every sum certified to be due from any person by an auditor in his report under section 47, unless such certified is modified or cancelled by an order of the board or of the tribunal made under section 48, and every sum due on the modified certificate shall be paid by such person within 60 days. So within 60 days, the Mutawalli has to pay the amount. If such payment is not made after giving the person concerned an opportunity of being heard, be recovered in the same manner as an area of land records. Sorry, in the land revenue by the board under section 56, may also recover damages not exceeding 12.5% of the amount due. Under section 57, notwithstanding anything contained in the Wakf deed, every Mutawalli may pay from the income of the Wakf property any expense properly incurred by him for the purpose of enabling him to furnish any particulars, documents or copies under section 36 or any accounts under section 46. So any expenses incurred making the audit go through, he has the Mutawalli can pay from the Wakf fund of that Wakf. Under section 62, no Mutawalli of a Wakf shall spend any money out of the funds of the Wakf for meeting any costs, charges or expenses which are or may be incurred by him in relation to any suit, appeal or any other proceedings for or incidental to his removal from office or for taking any disciplinary action against himself. So if there is a suit for removing the Mutawalli in the tribunal under certain sections of 64 or whatever it is, he cannot use the funds of the Wakf for which he is a Mutawalli to hire lawyers to pay for the expenses. He cannot, there is a bar there. He cannot use those, he cannot have access to that money for his personal defense. Under section 94(1), where a Mutawalli is under an obligation to perform any act which is recognized by Muslim law as pious, religious or charitable, and the Mutawalli fails to perform such act, the board may apply to tribunal for an order directing the Mutawalli to pay to the board or to any person authorized by the board in his behalf the amount necessary for the performance of such act. Under section 76(1), no Mutawalli, executive officer or other person in charge of administration of Wakf shall lend any money belonging to the Wakf or any Wakf property or borrow any money for the purpose of the Wakf except with the previous sanction of the board, provided that no such sanction is necessary if there is an expense provision in the deed of Wakf. So again, there is a deed of Wakf, which is a supreme document that governs that particular Wakf. For such borrowing or lending, as the case may be, the board may, while according sanction, specify any terms and conditions subject to which the person referred to in subsection 1 is authorized by him to lend or borrow any money or lend or any other Wakf property. So it has to be the board that has to sanction that. I am not very comfortable with this power of the board to lend any other Wakf property. Board is not the authority, in my opinion, when there is a law that says that you cannot, once a Wakf, always a Wakf. So how can they go and lend any other Wakf property to somebody and take money on that?
Where any money is lent or borrowed or other Wakf property is lent in contravention of the provisions of this section. So this section provides that it shall be lawful for the CEO to recover an amount equal to the amount which has been so lent or borrowed, together with the interest due thereon, from the personal funds of the person by whom such amount was lent or borrowed, to recover the possession of the Wakf property lent in contravention of the provision of this act, from the person to whom it was lent, or from person who claimed title to such property to the person to whom such property was lent. Under section 72, the mutwali of every wakaf having annual income of which is not less than 5,000 rupees shall pay annually out of the net income delivered by the wakaf. Such contribution not exceeding 7% of such annual income as may be prescribed to the board for the services rendered by such board or wakaf. So he has to pay 7% of the net income that he receives. And this point again was covered by Muhammad Khalid Khan very descriptively. Alienation of property. A very important topic, very important heading in this lecture. Under section 51(1), notwithstanding anything contained in the Wakaf deed, any lease of any immovable property which is Wakaf property shall be void unless such lease is effected with the prior sanction of the board. So board has to be informed if you are intending to lease the property and get their approval before leasing the property. 51(1)(a), which was inserted in the amended act. Any sale, gift, exchange, mortgage, or transfer of Wakaf property shall be void ab initio. So there is no question about it that the once a Wakaf, always a Wakaf. So even if the Wakaf has been sold, even if the property has been sold 30 years ago or 50 years ago, you can recover that property back. Except if the Wakaf properties are acquired under the provision of Land Acquisition Act 1984. So if the property is acquired, Wakaf property, it cannot be sold, but it can be acquired by the Land Acquisition Act 1984 or any other law relating to acquisition of land, if such acquisition is made in consultation with the board and provided the acquisition shall not be in contravention of the places of public worship, Special Provisions Act 1991, and provided the acquisition is for public purpose. In such case, suitable alternative land to be provided or compensation based on the market rate has to be provided for the Wakaf property that is being acquired. Because there is a huge development of roads and infrastructure going on in this country, in our country today. So there is a possibility that some of the land, Wakaf land, which are there, they can be acquired for the purpose of for the public purpose. Under Wakaf Act 1995, this is a very important one. Section 52A(1) again. Whoever alienates or purchases or takes possession of in any manner whatsoever, either permanently or temporarily, any movable or immovable property, being a Wakaf property, without prior sanction of the board, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to 2 years, provided that the Wakaf property so alienated shall, without prejudice to the provisions of any law for the time being in force, be vested in the board. This is the key. Without any compensation, therefore. So if the property is not vested in the board, there is a chance that it can be alienated. This is what it is saying. So it is very important for all of us as person interested in any Wakaf to ensure that all the properties are surveyed, logged into a WAMC properly, and are vested
with the board to safeguard the property of Wakf. Because note the word whoever in this section includes everyone in the chain, such as the seller, purchaser, registrar, revenue officer, sign, witness to the document, advocates who drafted, represented sellers, purchasers, or any or every person associated concerning the alienation of Wakf properties. So this is the under the whosoever, all these people will be punishable under the law. It is a very compelling section of the law to protect Wakf properties. However, there is a loophole in the Wakf Act, provided that the Wakf property so alienated shall, without prejudice to the provisions of any law, for the time being in force, be vested with the board. So that is the loophole which the scrupulous lawyers have used. So it is imperative on Mutawalli to ensure all Wakf properties are listed in the Wakf board under Schedule 1. Otherwise, it is a long and expensive legal battle to regain the Wakf properties. Restriction, and the last topic before I conclude my talk, restriction on purchase of property on behalf of Wakf. Under Section 53, notwithstanding anything contained in a Wakf deed, no immovable property shall be purchased for or on behalf of any Wakf from the funds of any Wakf, except with the prior sanction of the board. The board shall not accord such sanction unless it considers that the acquisition of such property is necessary or beneficial to the Wakf, and that the price proposed to be paid, therefore, is adequate and reasonable. I think it's a good section. It's a good law, Section 53, so that it is not misused. If you have a Wakf which has got a lot of fun, there is a check and balance by the board to ensure that the property that is being purchased has a certain market value, has a certain potential to be developed. And so the Wakf board can look into these matters and can give their opinion. In conclusion, I like to say the lack of governance on the Wakf assets has caused people to have minimum trust in Wakf institutions. The inefficiency in the administration and management of Wakf institution, the Wakf, are the main factors that have hindered the potential growth of Wakf. Many Wakf may not be efficiently developed and may remain idle. Consequently, these Wakf may not be able to assist in uplifting the socio-economic condition of the society. The development of Wakf is the key treasure trove of these properties that have now acquired economic potential beyond imagination. Today, Mutawalli considers Wakf as their kingdom, lest they forget that they are only caretakers, managers, and custodians of the Wakf properties. With this, I end my talk, and I'm available for any questions related to this topic. Thank you, sir. A wonderful talk. I want one clarification. Yes, sir. You mentioned about the committee of management to oversee the working of the Mutawalli. What is the constitution of this committee of management? See, in any Wakf, you have to file, you have to submit a scheme to further which states what are the objectives of this Wakf, what are the aims of this Wakf, and who are the managing committee of this Wakf, and who are the Mutawallis of this Wakf. Right. So that is the committee we are talking about, and it can be a person of any interest can form that committee by under Section 69 for any Wakf. Right. If he finds that Wakf is not properly being administered, he can under Section 70 ask for an inquiry from the Wakf board and propose. And I fully agree and I fully support the person interested in the Wakf
to issue an inquiry for that particular Wakf and replace this corrupt mutawallis. Right. So each city, we have to find people who have some kind of integrity and who are experienced professionals to form this committee and look for mutawallis who are mismanaging our Wakf properties and remove them under section 70 and 69 and replace them by section 69. Because you, me, anyone can become a mutawalli for any Wakf. Okay, because it is a definition of the person interested in Wakf. And It's a good mechanism. if you can do that for each and every city, right, we can have a very good development platform for Wakf Right. that we have. Fine, fine. Thank you, thank you. Yes, Abdul Rahman. जी सर। Question? हाँ, 2-3 क्वेश्चन है उसमें पूछे थे। एक जियाउद्दीन साहब पूछ रहे हैं, व्हाट आर द बेसिक पैरामीटर टू बिकम ए मुतवल्ली? You have to be a Muslim, a person of interest. Just see the definition of person of interest. You can become a mutawalli. It is just very simple as that. Yes. You can become, anyone can become a mutawalli for any Wakf. There is no bar to it. Under section 69, and see the definition of person of interest in section 3 definition. So you can become a mutawalli if you feel that there is and believe me, there are benefits to become a mutawalli. If you are developing the land, if you create development for that land, the revenue is increased, you have a certain right into the revenue that is being generated by this Wakf land. Under Sharia, I'm not talking about anything else, because it is very, very clearly mentioned, pecuniary benefits for people who are and can be a mutawalli. In the law, it says that in the definition also. Where if you look up the definition of a person interested, you look up the definition of person interest. Person interested means any person who is entitled to receive any pecuniary means what? What is the word of English word for what? The revenue or other benefits from the Wakf, and includes any person. But you just don't get any revenue if you don't work for it. You have to develop the Wakf land. There is a Nizam's order was there in 1927 regarding Inami land. So he said that if the Wakf doesn't prohibit for a person who's looking after the Inami land to take any benefit from it, then he can, as a person, Inami, as a mutawalli, can have 1/3 for himself, 1/3 for his family, and 1/3 for the purpose for which this Inam was given. This is a fatwa, or not the fatwa. This is the order, Farman of the Nizam in 1927. Now he must have referred to the jurists of that time. So there are benefits to become a mutawalli, but you have to develop the land for the benefit of the community, and not sell those lands and take the money and distribute it like that. You have to develop the land, my friend. Yes, how Chaudhary sahab? एक क्वेश्चन और है सर, राशिद अंसारी साहब ने पूछा है, इज देयर एनी ओवरलैप ऑफ पावर बिटवीन मुतवल्ली एंड सीईओ एंड हाउ कॉन्फ्लिक्ट आर रिमूव्ड? Is there any overlap of power between mutawalli and CEO? No, the CEO has his own powers of supervision of Wakf, okay, and mutawalli has his own obligations for the maintenance of the Wakf. So there is a difference between a power of the CEO, which is supervisory on the Wakf, and there is an obligation. There is no power. Mutawalli has no power. He is obligated to perform his duty. It is an obligation on him. It's not a power that he can exercise. It's an obligation on him by the mere fact that he's a mutawalli.
Okay, The so other yeah. thing I just want to mention, last point, which a lot of people have missed here. See, there is a law which says that every person who's somehow related into the work of administration or doing or mutawalli, or whether he's a CEO or whether he is a member of the board or a mutawalli, they are deemed to be public servants. This is a law. They are deemed to be public servants. So they have to, under section 21 of IPC, they are deemed to be public servants. Now, the public servants, if they don't perform their obligations and the duties, then they are also will be treated under IPC for their lack of duties. This is what I want to say, because people are not understanding that, you are a mutawalli, so you can do whatever you want. No, or you are a CEO, you can do whatever you want. Or you are a member of the board, you can become whatever you can pass anything. They are public servants first. So they are under definition of public servant under section 21. They are defined as public servants. So if you are defined as public servant and all the laws in this Wakf Act are in conjunction with the Indian Penal Code. So it is not a separate law only. So it is all under that umbrella of Indian Penal Code. So you will be liable as penalties or whatever things that are applicable in IPC if you do not perform your duty, or there is a lack of, because even again, if you look up the section 9(1), the Central Wakf Board, you can complain to the Central Wakf Board that these people, there is see, 9(4) says prima facie evidence of irregularity or violation of provisions of the Act. Now, violation of provision of Act is very huge, right? So Mutwalli can fit into one of those things where he's violating the Act. So the Central Wakf Council will have to act on this against the Mutwalli. Why he has not performed within the provisions of the Act, or the board, or the member of the boards, why they are not acting within the provisions of the Act. And there is a lot of cases where the Wakf Board has failed to act, but nobody has used this provision. I think it is important for us to create this awareness that, as a person of interest in the Wakf, you have a lot of rights and a lot of power to improve the function not only of the Wakf, but also the function of the Wakf Board, the CEO, or whatever it is. Chaudhary Sahab, any more questions? Thank you, sir. Thank you, sir. I am really delighted with your talk. You have given such a clarificatory things that there is no doubt in your words. It conveyed every word to us and clarified the issues very vividly. So I am really grateful to you for such a beautiful talk. On behalf of Zakat Foundation of India and Maharashtra Wakf Liberation and Protection Task Force, and my own behalf, I, from my core of heart, I am grateful, and express gratitude and express thanks for your valuable time. You have presented your talk in a very beautiful manner. I am highly appreciative, and I request that your services will be needed in future, and I'm sure you will provide your services in this service for the society, service to the God in future. Thanks a lot. Thank you very much. Assalamu Thank you alaikum. very much. Jazakallah khair. Anytime, Chaudhary Sahab, you have anything, I am there to give a lecture on anything. Thank you, sir. Thanks a lot. Thanks a lot. आजकल हुआ ना फुटबॉल सब खामोश हाँ? सब खामोश तीन दिन से जो चल रहा ना हाँ? लॉयर आ गए कोरोना आ गए ये आ गए लेकिन उनके की जो
Hello. Hello. Am I audible? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब हैं? हाँ जी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सर अहमद बोल रहा हूँ। जी जी वही। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलाम कर रहा हेलो। हूँ आपको। सलाम वालेकुम अर्ज कर अस्सलाम। रहा हूँ। वालेकुम भाई। जी। आपने टाइम निकाला है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने नहीं भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे रास्ता कायम किया, मुझे बताया इस बारे में। नहीं, हमें तो, हम तो लोगों से सुन सुन के आए हैं, जब कि साहब निसार साहब भोपाल में है, उनको पकड़िए इस काम के लिए, तो मैंने कहा जरूर कोशिश नहीं करता नहीं, हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत शानदार, बहुत अच्छा इनिशिएटिव, बहुत अच्छा पहल शुरू की है आप लोगों ने भाई। हाँ, इंशाल्लाह ये जो कम्युनिकेशन गैप है पब्लिक में जी और हाँ सर। वक्फ साइड में, उस गल्फ को काफी कम किया जा सकता है, जी सर, क्योंकि एक्चुअली इस ना तरह हम का उनको कोई, जानते हैं ना हम। बेशक इस तरह का एक फोरम की बहुत सख्त जरूरत थी भाई। एक्चुअली क्या है, लोग बटे हुए हैं और हर स्टेट के हालात कमोबेश एक जैसे हैं वक्फ के मामलात को जी लेकर। जी 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 जी। और इसको किसी तरह से आप लोगों ने जो पहल की है, और भी कोशिशें हुई हैं, जैसे ये पुणे में खान साहब ने है, एजे खान साहब थे, अनवार भाई, उन्होंने उनसे वो भी कांटेक्ट किया था। एसोसिएटेड है, वो भी इसी। और जी सर, जी सर। वक्फ लिबरेशन मूवमेंट उन्होंने शुरू किया। मैं शामिल नहीं हो पाया किसी वजह से, कुछ दूसरे दीगर मसरूफियात की वजह से, लेकिन बहुत अच्छी जी कोशिश थी। और ये कोशिश भी आप लोगों की बहुत शानदार, और इंशाल्लाह इससे काफी अच्छा होगा, इम्प्रूवमेंट होगा इससे। और बहुत जरूरियत आमीन। है भाई इसकी। जी हाँ सर। जी जी जी। तो आपका बहुत बहुत तो शुक्रिया कि अभी आपने मुझसे राब्ता कायम किया था। और मैं ज्यादा ऐड के बारे में तो बताना बेहतर नहीं समझता, क्योंकि नहीं इसमें नहीं माशाल्लाह नहीं, इसके काफी बारे में तो कानून लोगों को ने जानने बताया वाले है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन हाँ मेरा हाँ। अपना जो तजुर्बा रहा है जी 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 एज ए सीओ वक्फ बोर्ड, मेरे पास एडिशनल चार्ज ही था। 2 बार मैं सीओ वक्फ बोर्ड रहा हूँ जी जी और एडमिनिस्ट्रेटर रहा 2 बार। तो जो जी। मैंने हालात देखे हैं, जो कुछ कर सका और जो करना जी चाहिए, वो सब मैं चर्चा करना चाहूंगा, आप अगर इजाजत देंगे तो। जी जी। तो मैं अब 42 लोग तो पार्टिसिपेंट से कनेक्ट हो गए हैं और कनेक्ट माशाल्लाह होते माशाल्लाह। रहेंगे। तो मैं जी हाँ बिस्मिल्लाह के करके मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। जी भाई, जनाब शुक्रिया। निसार अहमद साहब, IAS MP कैडर और एडमिनिस्ट्रेटर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, जो कि काफी सीनियर है और बहुत तजुर्बा रखते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि वो अपने तजुर्बे से जो है पार्टिसिपेंट्स को बताएं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। थ्योरी तो हम फोरनून में तो काफी स्टडी किए और जाने, और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों को मिली। हमें भी नहीं, बहुत सी चीजें नहीं मालूम थी, बताई गई। और अब जो है ये सेशन प्रैक्टिकल का है कि प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको एड्रेस किया जा सके। तो मैं दरख्वास्त करूंगा अपने बड़े भाई जनाब निसार अहमद साहब से कि वो अपने तजुर्बे से हम लोगों को एनरिच करें, और हम लोगों को कुछ अच्छा तजुर्बा जब मालूम होगा, स्किल्स जब हमारी इम्प्रूव होंगी, तो हम काम भी अच्छा कर सकेंगे। तो मैं अब दरख्वास्त करता हूं कि जनाब निसार अहमद साहब आपके सामने हैं और वो अपनी बात रखते हैं। शुक्रिया जी। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। जनाब खटानी साहब भी मेरे साथ हैं यहाँ, और अच्छा वो भी अच्छा अच्छा। तशरीफ रखते हैं। और जी खटानी जी। साहब भी वक्फ बोर्ड के अरे एडमिनिस्ट्रेटर भी साहब, रहे लंबे खटानी टाइम साहब को तो तक। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ टाइम हमें भी दे, लेकिन खटानी साहब ने माजरत रखी, तो जी हाँ जी हाँ। आ नहीं पाए। नेक्स्ट टाइम इनको हम छोड़ेंगे थोड़ी। नहीं नहीं सर, हम शामिल है सर, शामिल शिरकत में काम कर रहे हैं जी सर। हाँ।
जी 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 तो ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, आप सब लोगों की, और ये वक्फ की भलाई के लिए, और इसके कुछ अच्छे नतायज सामने आएंगे, हम ऐसा मानते हैं। मेरा मानना ये रहा है कि अब तक जो भी मैंने डिस्कशन या मज़ाकरात हुए हैं या इसमें शिरकत की है, तो मैंने ये हमेशा पाया है कि इसमें वक्फ क्या है, वक्फ की अहमियत क्या है, इसकी शरई हैसियत क्या है, इस तरह की रवायती तकरीरें होती थी। और जो बुनियादी बातें हैं, बुनियादी जो दिक्कतें हैं, उसकी तरफ कम ध्यान दिया जाता था, या उसके बारे में कम चर्चा होती थी। तो इसमें सर बेहतर है कि बहुत अच्छी तरह से ये सीरियस कोशिश आप लोगों ने शुरू की है। और मैंने देखा था, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक दिन, कि इसमें काफी कानून के जानने वालों के लोगों ने और बड़े बड़े लोगों ने इस पर अपने राय मशवरा, और लोगों को जानकारी में आई बहुत सारी बातें। तो इसमें जो बुनियादी बातें हैं और बुनियादी जो दिक्कत है वक्फ की, उस पर तवज्जो कम दिया जाता है, और अक्सर इस तरह के मज़ाकरात में फिर जाती इंफरादी किसी वक्फ को लेकर कोई चर्चा शुरू होती है, और फिर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम और वो सिलसिला शुरू होता है। तो अच्छी बात है, ये सब बातें, इस तरह की बातों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ये बहुत खुशी है मुझे इस बात को लेकर। मैं जो अपनी बात कहना चाहूँगा सर, वो ये कि मैं चूंकि वक्फ बोर्ड में 2 बार सीओ वक्फ बोर्ड रहा, एडिशनल चार्ज था हालांकि मेरे पास, और 2 बार मुझे मौका मिला वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर रहने का, और मैंने कोशिश की कि जो बेहतर कर सकूं उसको करने की कोशिश की। एक बात जो बहुत समझ में आई मेरे, कि देखिए कोई भी कानून हो, वो कानून आज खुद अमल पैरा नहीं होता, जब तक कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए को अच्छी कोशिश न की जाए, खासतौर पर उस एजेंसी, उस डिपार्टमेंट को जिसकी जिम्मेदारी है। तो जो माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो जिस भी रियासत में, और हमारे जो वक्फ बोर्ड हैं, इनके ये उस जिम्मेदारी से और उस तरह से काम नहीं करते, उसमें हालात अच्छे नहीं है। जो मेरा अपना तजुर्बा है मध्य प्रदेश को लेकर, और जो मैं सुनता हूँ दीगर स्टेट्स में, वहाँ भी कमोबेश हालात एक जैसे ही हैं। तो अगर कानून कितना भी अच्छा हो, अगर उस पर अमल अच्छे से नहीं होगा, तो फिर उसका वो एकदम बेकार हो जाता है। और वक्फ एक्ट के साथ भी यही हो रहा है कि पहले जो वक्फ एक्ट था, फिर उसके बाद 95 का एक्ट आया, फिर अभी तरमीमी एक्ट आया 2013 में। तो 2013 में तरमीमी एक्ट आने के बाद भी आप देखेंगे कि हालात में कोई सुधार नहीं है, और उसके बाद फिर बहुत सारे उसके जो अहम तरीन सेक्शन हैं, या उसमें जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, वो बहुत सारे स्टेट्स में नहीं बने हैं, अभी मध्य प्रदेश में भी नहीं बने हैं। और इसकी वजह काफी हद तक हमारा जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, वह बोर्ड हैं, वही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं सब। तो मेरा कहना ये था कि मैं कुछ स्पेसिफिक केसेस देखूंगा कि मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पिछले तकरीबन 12 से 15 सालों में वक्फ जायदाद की जो हेरा फेरी हुई, और जो उसकी अफरा तफरी हुई, और मैंने आने के बाद फिर उसे जो वापस किया, और क्या लिटिगेशन की दिक्कतें गई, और अभी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो हम वापस नहीं हासिल करें, उसके बारे में मैं थोड़ा सा इस में जानकारी देना चाहूंगा आप लोगों को। जो मैंने दिक्कत महसूस की है वक्फ एक्ट को लेकर, कि पहली चीज तो ये है कि जो वक्फ एक्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, तो उसके मुताबिक अपॉइंटमेंट ही नहीं होता है। और इसमें जैसे अभी जो नया तरमीमी एक्ट आया है, इसके मुताबिक तो वक्फ में नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफिसर होना चाहिए। लेकिन कई जगह देखा मैंने, अभी मध्य प्रदेश में भी देखा कि गुज़िश्ता कुछ सालों में, कि वो पे स्केल के हिसाब से कोई भी ऑफिसर को लाते हैं और उसे लाकर बैठा देते हैं। उसे एक तो नॉलेज नहीं होता है, और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट से लोग आते हैं जिनमें उतना विजन नहीं होता है कि वक्फ को हमें कैसे चलाना है, या उतनी ईमानदारी उनमें नहीं होती है। और खासतौर पे वो जो अपने पॉलिटिकल अप्रोच से और किसी तरह से आकर आते हैं वक्फ बोर्ड में, और फिर हमारे लिए परेशानियां और ऐसी दिक्कतें छोड़ के जाती हैं जो सालों साल फिर परेशानियां खड़ी करती हैं। दूसरा जो मैंने महसूस किया, कि जो वक्फ बोर्ड हैं, इसमें जो एम्प्लॉयज हैं, इनके रिक्रूटमेंट का
इनकी काबिलियत का कोई पैमाना नहीं है, और ऐसे नाअहल और गलत लोग, अनट्रेंड एम्प्लॉयज इसमें आते हैं, उनमें भी सीरियस नहीं होती है, उनमें समझ नहीं होती है। और वक्फ में तो बहुत कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड से रिलेटेड मामलात होते हैं, लेकिन उनको उनकी जानकारी नहीं होती है सब। जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में है खसरा है, पंसाले हैं, और जो दीगर रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं, जो गजट नोटिफिकेशन वगैरह है, तो मैंने देखा कि वक्फ बोर्ड के जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको उसकी भी बेसिक जानकारी भी नहीं होती है। और वैसे आप देखेंगे कि जो हमारा 2013 का ये तरमीमी एक्ट आया, तो इसमें जो अहम तरीन इसके सेक्शन है, उसके अमल में कोताही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से काफी हद तक काफी बरती गई। और मैंने अपने टाइम पर तमाम कोशिश की, अभी 2017-18 में भी मैंने कोशिश की, जब मैं 1 साल करीब एडमिनिस्ट्रेटर था स्टेट गवर्नमेंट से, और कंसर्निंग मिनिस्टर से भी मैंने कांटेक्ट किया, लेकिन उसके नतीजे आ नहीं पाए। इसका मुझे अफसोस है। तो जब तक औकाफ का देखिए जो इंतजाम और इंसराम पर इससे बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर आप कानून है आपके पास और कानून के मुताबिक हम रूल्स नहीं बना सके, रेगुलेशन नहीं बना सके हैं, तो ये परेशानियां खड़ी कर रहा है। और मैं समझता हूँ काफी स्टेट्स में ये दिक्कतें हैं कि गवर्नमेंट के लेवल पर भी और पॉलिटिकल लेवल पर भी बहुत ज्यादा सीरियसनेस होती नहीं है, और इसके कामकाज में भी कोई मॉनिटरिंग सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता है। इसकी मॉनिटरिंग एक्चुअली ये कहीं सब्जेक्ट उनके प्रायोरिटी में होता भी नहीं है। और लेकिन हमने वो दौर भी देखा है सर, जबकि मध्य प्रदेश में 94-95 में 95-96 में वक्फ बोर्ड को सीरियसली लिया गया, स्टेट गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली लिया। उस जमाने में जब 95 का एक्ट आया था, तो उसके मुताबिक हमारे यहाँ रूल्स बने। तब मैं पहला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया था, 1 साल के लिए आया था, लेकिन मैंने देखा कि गवर्नमेंट लेवल पर इसकी मीटिंग्स होती थी, इसकी मॉनिटरिंग होती थी, उसकी प्रोग्रेस मांगी जाती थी, और टाइम से रूल्स फ्रेम हुए थे। रूल्स का ड्राफ्ट मैंने ही तैयार किया था, रेगुलेशन तैयार हुआ था, और उस जमाने में रेंट कंट्रोल एक्ट से वक्फ के प्रॉपर्टी को एग्जेम्प्ट किया गया था, और ये सब काम हुआ। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे वो इस पर बहुत ध्यान संजीदा थे, और वो खुद इसकी मॉनिटरिंग करते थे, और सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से इसके मॉनिटरिंग, और ये सिलसिला तकरीबन 3-4 साल तक चला। और मेरा खुद का मानना है कि आज का जो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड है वो काफी कुछ उन कोशिशों की वजह से भी खड़ा है, कि उस दौरान जो थोड़ा बहुत शुरुआत हो गई थी उसी बुनियाद पर आज खड़ा है। खटानी साहब भी उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, तो वो भी मेरी बात से सहमत होंगे इस बात को लेकर। और जो सबसे बड़ी एक कमी है कि जो नया तरमीमी ये एक्ट आया था 2013 का, इसमें जो हमारा सर्वे होना है औकाफ जायदाद का, जो असर नौ सर्वे होना था, तो वो सर्वे के बारे में सर्कुलर तो आए, स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, स्टेट गवर्नमेंट के पास गए, और बिना कोई ट्रेनिंग दिए और इसका सर्वे शुरू हो गया। जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट कलेक्टर्स को और कमिश्नर्स को सर्कुलर भेज दिए कि अब आप सर्वे करके भेजिए। वहाँ 2 या 3 साल के बाद सर्वे रिपोर्ट आती है। इत्तेफाक से मैं जब जनवरी 2019 में आया तो 5 या 6 जिलों की सर्वे रिपोर्ट मेरे सामने आई। तो मैंने देखा कि उसमें जिन जिलों में तकरीबन 349 जो बाद में रिपोर्ट आती है वो 290 की है, यानी कम हो गए। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी थे जिसमें कि 150 थे, बाद में 99 वक्फ हो गए। अब ये मुश्किल ये है कि लोगों को ये बताया ही नहीं गया कि जो सर्वे होना है, और जो एक्ट में है कि सेक्शन जो इसका वक्फ में है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी ऑलरेडी नोटिफाइड है, तो सब्सिक्वेंट सर्वे में उसको रिव्यू नहीं किया जाना है।
यानी जो पहले हमारे वक्फ हैं, जो ऑलरेडी सर्वेड हैं और जो ऑलरेडी नोटिफाइड हैं, उनका रिव्यू नहीं होना है। लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत सारे वक्फ को डिलीट कर दिया और इससे बहुत नुकसान हुआ। हालांकि हमने उस रिपोर्ट को टर्न डाउन किया, उस रिपोर्ट को रिजेक्ट करके गवर्नमेंट को दोबारा लिखा और गवर्नमेंट का ध्यान इस बारे में हम लाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू से मैं पर्सनली मिला, मिनिस्टर से मिला, और रेवेन्यू मिनिस्टर और हमारे माइनॉरिटीज वेलफेयर मिनिस्टर जो थे उनके साथ बैठकें की, तब जाकर ये हम इस पे कामयाब हो पाए। वरना हमारे 6 जिलों से तो ऐसा सर्वे आया था कि वक्फिया जायदाद पहले से कम हो गई थी और इस प्रोविजन के बारे में कलेक्टर्स को और रेवेन्यू अथॉरिटीज को बताया ही नहीं गया था। फिर जब हमने उनका ध्यान खींचा और बहुत सारे वक्फ में हमारे जो ऐसे सेक्शन है जिसमें कलेक्टर्स का और एसडीएम्स का रोल है, तो उन्हें हमने सभी को वक्फ एक्ट की कॉपियां प्रोवाइड कराई, सभी को डीओ लेटर लिखे, सभी को सेक्शन लगाकर भेजे कि आप लोग इसको देखिए, वरना हमारे वक्फ का जायदाद बुरी तरह से नुकसान हो रहा है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और एसडीएम्स उसमें दखल नहीं दे रहे थे। उसकी वजह ये थी कि हमारे जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे और वक्फ बोर्ड के जो ऑफिसर्स थे, वो चाहते नहीं थे कि कलेक्टर्स की दखलंदाजी हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की दखलंदाजी हो। और जो मैं नतीजे पर पहुंचा, तो उसकी वजह ये थी कि इन्होंने तमाम बहुत सारे वक्फिया जायदाद की इलीगल, गलत तरीके से लीज की हुई थी, गलत किराएदारियां करते थे। और जब अगर कलेक्टर का और एसडीएम्स की उसमें दखल होती थी तो वो फिर बाजार रेट और उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान खींचते थे, तो ये कामयाब नहीं होते। तो इन्होंने एक बेहतर तरीका ये निकाला कि साहब ये तो वक्फिया जायदाद है, वक्फ बोर्ड हमारा अपना है और इसमें सरकार की दखलंदाजी क्यों होनी चाहिए। तो तब मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को लेटर लिखा और वक्फ एक्ट की कॉपियां उन्हें भेजी और उनका ध्यान खींचा कि आप लोग, आपके इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वक्फिया जायदाद की जो नौयत है वो भी एक तरह से, जो नेचर है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की तरह से ही है। और फिर उनकी मदद से बहुत सारी बड़ी प्रॉपर्टीज जो खुर्द-बुर्द हो चुकी थी और वो हम सर उसको वापस ला पाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और उसका नतीजा हमने मध्य प्रदेश में देखा कि पिछले 12-15 सालों में वक्फिया जायदाद की बड़े पैमाने पर तबाही हुई। हालांकि मैं कुछ स्पेसिफिक केसेस अभी आपको बताऊंगा और इसके डिटेल राइटअप यहाँ तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसके राइटअप मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा तैयार कर करके, और आप देखेंगे, आपको खुद भी लगेगा कि बुरी तरह से लोगों ने, हमारे अपने ही लोगों ने वक्फिया जायदाद को तबाह किया है, जिसमें हमारे चेयरमैन भी शामिल थे, वक्फ बोर्ड के लोग भी शामिल थे, हमारे सीओज भी शामिल थे, सारे लोग शामिल थे। और उनके लिए ऐसा लगता था कि वक्फ एक्ट का कोई कायदा कानून नहीं, उन्होंने अपने पर्सनल तो एक जमींदार के हैसियत से प्रॉपर्टियों की बर्बादी की। दूसरा यह है सर कि जो रूल्स रेगुलेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। मैंने जून 2018 को ही गवर्नमेंट को इसका ड्राफ्ट तैयार करके भेज दिया था, रूल्स का भी, रेगुलेशन का, और बराबर कांटेक्ट करता रहा। फिर तर्जुमा भी इसका, हिंदी में भी तर्जुमा वो भी भेज दिया, लेकिन आज तक उसका पब्लिकेशन नहीं हुआ। तो इसमें क्या है कि सरकार का ही तरफ से दिक्कतें हैं, और जब तक रूल्स नहीं होंगे तो कैसे फिर इम्प्लीमेंट होगा। आप मुझे बताइए, जैसे नया जो तरमीमी एक्ट है इसमें सेक्शन जोड़ा है 52A है शायद, जिसमें कि वक्फ प्रॉपर्टी की अगर हेरा फेरी होती है और इसमें गड़बड़ी होती है तो ये नॉन कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा और 2 साल का इसमें राइगरस पनिशमेंट है। लेकिन अगर आप प्रोसीजर ही नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे कार्रवाई होगी। जैसे जिन भी मामलों में मैंने एफआईआर कराई, बहुत सारे मामलात में मैंने एफआईआर कराई, ऑफिसर्स के खिलाफ भी कराई और चेयरमैन के खिलाफ भी कराई, तो उसमें दिक्कत ये होता था कि आईपीसी के सेक्शन तो हम लाते थे थानों में करके, दबाव डाल के एसपी से, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिलकर, वो मैंने कराया, काफी एफआईआर कराई। लेकिन जो वक्फ एक्ट है, वक्फ एक्ट में कैसे एफआईआर होगी और उसका प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कैसे होगा, क्योंकि जब तक वक्फ के रूल्स नहीं बनेंगे, रेगुलेशन नहीं बनेंगे, तो वक्फ ट्रिब्यूनल भी कैसे काम करेगा। क्योंकि ट्रिब्यूनल के सामने भी है तो फिर ट्रिब्यूनल में कहा जाए कि हम डायरेक्ट उसमें इसका चालान पेश करें सीजीएम के बजाय, या सीजीएम कोर्ट में पेश होगा या पुलिस कार्रवाई करेगी, ये सब चीजें जब इसके प्रोसीजर लीड डाउन नहीं होगा तो कार्रवाई सर बहुत मुश्किल है। इसी तरह से जो हमारा वक्फ बोर्ड है,
वक्फ बोर्ड में सर ये तो आप मानेंगे कि वक्फ बोर्ड का जो इंतजाम और इंसराम की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। और स्टेट गवर्नमेंट में जो मैंने अभी तक देखा है कि ये सबसे नेग्लेक्टेड डिपार्टमेंट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट माना जाता है। इसमें जो मिनिस्टर्स आते हैं या इसमें जो उनकी तो कोई ज्यादा इसमें दिलचस्पी होती नहीं है, और जो सेक्रेटरीज भी आते हैं वो भी कोई बहुत अच्छे या तो सरकार नाराज होती है या फिर वो बहुत ही नकारा किस्म के ऑफिसर्स होते हैं जिनका उसमें कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। तो हमारे अपने बीच के सर जो सियासी रहनुमा हैं या जो लोग हैं या जो असर रखते हैं वो अगर पहल करें तो तभी कुछ उम्मीद है कि कुछ हो सकता है और सरकार के ऊपर दबाव डाल के कुछ किया जा सकता है। क्योंकि जब तक स्टेट गवर्नमेंट या रियासत इस पर ध्यान नहीं देगी तब तक बहुत मुश्किल है। और मैंने आपको बताया कि 94-95 में हमारे यहाँ काफी अच्छा काम हुआ। तो मैं सर कुछ केसेस के बारे में बताना चाहूंगा आपको। जी हेलो हेलो तो सब आवाज आ रही है सर? सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। मैंने अपने को म्यूट कर रखा था कि हमारी तरफ से डिस्टर्बेंस आपको न जाए। नहीं हम सर, तो सुन रहे हैं आपकी बात। कुछ मैं स्पेसिफिक केसेस बताना चाहूंगा मैं, और इसका डिटेल मैं राइट अप भेजूंगा आप लोगों को। तो मैं सर कुछ ऐसा बताना चाहूंगा कि किस तरह से लोगों ने इसमें गड़बड़ियां की। जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक जिला है बुरहानपुर, और बुरहानपुर जिले में एक कब्रिस्तान है एमागिर्द कब्रिस्तान। इसका खसरा नंबर 222 था और तकरीबन 18 एकड़ का ये कब्रिस्तान है, शहर के बीचों बीच में है। तो ये बताने का मकसद सर ये है कि लोग किस तरह से गड़बड़ियां करते हैं। तो उस वक्त 2008-9 में जो हमारा वक्फ बोर्ड था, इसमें जो चेयरमैन साहब थे, जो मेंबर थे, और उसमें से एक मेंबर हुआ करते थे, वो एमएलए भी थे, और वहाँ एक आजाद एजुकेशन सोसाइटी थे, उसके भी वो मेंबर थे, उसके वो चेयरमैन थे, और वो वक्फ बोर्ड के भी मेंबर थे। उन्होंने एक दरखास्त दी वक्फ बोर्ड में कि मुझे 2 एकड़ जमीन दे दी जाए इस एमागिर्द कब्रिस्तान से। अब पहली चीज तो यह है कि कब्रिस्तान है तो इस तरह से जमीन दी नहीं जा सकती। दूसरा ये है कि वक्फ एक्ट में किस तरह से जमीन अलॉट होगी, किस तरह से लीज होगी, ये बहुत क्लियर था। तब ये नया अमेंडमेंट आया नहीं था। बोर्ड को अख्तियार था और एक पूरा प्रोसीजर था उस पर कि किस तरह से उसमें प्रीमियम और रेंट लगेगा, और बोर्ड के पास जाएगा, बोर्ड उसमें तय करेगा, कलेक्टर की रिपोर्ट आएगी। बहरहाल उन सब चीजों को बगैर फॉलो किए कि सिर्फ एक बोर्ड का मेंबर है जो एमएलए भी है और अपनी सोसाइटी के लिए जमीन मांगता है, और उसे 2 एकड़ जमीन अलॉट कर दी जाती है सेम डे। फिर एक हफ्ते के बाद वो एक दरखास्त देते हैं कि सर ये 2 एकड़ जमीन तो बहुत कम है, हमें 3 एकड़ कर दीजिए। तो उसी लेटर में 2 एकड़ के बजाय 3 एकड़ एक अमेंडमेंट जारी हो जाता है, 3 एकड़ जमीन दी जाती है। और जबकि वो आज जमीन करीब 17 करोड़ का, जब मैंने उसका असेसमेंट कराया तो पता चला कि ये जमीन की वैल्यू थी 17 करोड़। और फिर बिना बोर्ड की इजाजत के सिर्फ चेयरमैन ने और जो उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, दोनों ने मिलकर उनको जमीन अलॉट कर दी। अब तकरीबन 2 साल के बाद ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने क्या किया कि वो उस ऑर्डर को, जो 3 एकड़ जमीन उन्होंने अलॉट की थी, उसको कैंसिल कर दिया ऑन पेपर। लेकिन ये जो बीच का पीरियड था, इस पीरियड में उस एमएलए साहब ने और वक्फ बोर्ड के मेंबर साहब ने उसको 8 लोगों को वहां उसको सबलेट कर दिया। 8 लोगों के नाम उन्होंने रजिस्ट्री करा दी वहां पर, और उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो गई जो मेंबर थे। और जो वक्फ बोर्ड के थे उन्होंने पेपर में उसको कैंसिल किया। ये मेरी नॉलेज में सर, जब मैं वक्फ बोर्ड में 2014-15 में आया तो मेरी नॉलेज में ये केस आया। मैंने इस केस को रीओपन किया और उस लीज को मैंने कैंसिल किया, और कैंसिल करने के बाद फिर धारा 54 में बेदखली की कार्रवाई की। मैंने इसमें एफआईआर भी कराई और उस ऑफिसर के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके दी। वो चार्ज प्रूफ हुए, उनके खिलाफ रिकवरी का ऑर्डर भी हुआ उसमें। लेकिन लोग इस तरह से काम करते हैं, मगर वो प्रॉपर्टी को आज तक वो वापस नहीं आ सकी। आज भी वहां बिल्डिंग है और वो मैटर लिटिगेशन में कोर्ट में पेंडिंग है।
तो ये मैं आपको एक मिसाल इस तरह के जी जी तफसील हेलो सर भेजूंगा लोगों को कि इस तरह से लोग करते हैं, वक्फ बोर्ड ही करता है। और ये जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे ये बड़े कदावर शख्सियत थे साहब, ये सेंट्रल में मिनिस्टर भी रहे और भोपाल के बड़े नामी आदमी थे और उन्होंने ये हरकत की। इसी तरह से यहाँ एक भोपाल में ही शहर में एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान अहमदपुर। ये करीब 2.5 एकड़ का कब्रिस्तान है और बहुत कीमती जमीन है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से एक अजय बहादुर सिंह साहब को उन्होंने ये कब्रिस्तान मैरिज गार्डन के पर्पज से उनको लीज किया 11 महीने के लिए। और वो 1,56,00,000 का एक एस्टिमेट लेके आए, उस पर कंस्ट्रक्शन का प्रपोजल लेकर आए जिसको अप्रूव किया वक्फ बोर्ड ने। और अप्रूव करने के बाद उनको 20 लाख प्रीमियम पर उनको इजाजत दे दी गई मैरिज गार्डन बनाने की। तो मैं जब अब मेरी नॉलेज में केस आया तो उन्होंने वहां पर काम शुरू किया और जब वहाँ मशीन जेसीबी मशीन और सब चली तो कब्रों से उसमें से हड्डियां निकालना शुरू हुई, शोर मचा, पुलिस आई और मेरी नॉलेज में आया तो मैंने फिर एक उस केस को लेके और उस लीज को कैंसिल किया, उस ऑर्डर को कैंसिल किया और उसमें भी FIR कराई इन लोगों के खिलाफ, प्रीमियम भी उनका वापस नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि किस हद तक लोग बर्बादी करते हैं कि एक कब्रिस्तान है, जिंदा कब्रिस्तान, और उसमें जो शर्तें लगाई गई वो शर्तें भी बड़ी अजीब थी कि इस कब्रिस्तान में जो जमीन होगी वो तो वक्फ ही रहेगी और 11 महीने की लीज पे है, लेकिन उस पर जो स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है मैरिज गार्डन के, जो उसमें कमरे बन रहे हैं, रूम बन रहे हैं, वो सब उस जो लीज होल्डर है उसकी मिल्कियत में होंगे। तो ये बड़ा अजीब था इस तरह के। तो बहरहाल वो कैंसिल करके हमने उसको, उस कब्रिस्तान को वापस हासिल किया, उसके लीज भी कैंसिल की, उसका प्रीमियम भी वापस नहीं किया और इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां भी की हमने। एक और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर भोपाल के पास ही एक विदिशा जिला है सर। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? हाँ सर बोले आप, आवाज आ रही है। तो एक कोलवाई डिस्ट्रिक्ट है सर, यहाँ पर एक वक्फ था, वक्फ नवाब जाफर अली खान साहब, नवाब साहब का ही वक्फ था ये, वक्फ अला औलाद। तो नवाब साहब ने वक्फ बोर्ड में एक दरखास्त दी कि साहब हमारी एक 16 हेक्टेयर जमीन है जो हमारी अपनी निजी मिल्कियत की जमीन है, और एक वक्फ है जो जिसका रकबा 6 हेक्टेयर है, और इस को मैं अब एक्सचेंज करना चाहता हूँ कि जो प्रॉपर्टी आप पता है कि अनकंडीशनल वक्फ होता है, वक्फ और परमानेंट होता है, उसको बाद में फिर उसका कोई हक नहीं रहता। तो उन्होंने इसके एक्सचेंज करने के लिए एक डिमांड, एक एप्लीकेशन वक्फ बोर्ड को, एक प्रपोजल दिया उन्होंने, और वक्फ बोर्ड ने भी सेम डे उसका रेजोल्यूशन करके और इस एक्सचेंज की इजाजत दे दी। तब इसमें यहाँ पर कुछ लोगों ने शिकायत की और वो सिलसिला तकरीबन 3 साल तक चलता रहा, और गवर्नमेंट लेवल पर भी सर इस तरह का फैसला होता है कि ये जो एक्सचेंज हुआ है ये एक्सचेंज वक्फ के इंटरेस्ट में है, और तकरीबन ये केस फाइल हो गया था। तो 2015 में जब मैं आया तो